So today we are going to do nanotechnology. In this, we are going to first conceptually understand nanotechnology. Okay, I don't believe in making you muck things up. Okay, and then we'll see the current developments. Nanotechnology, there are some basic concepts. Now there are some concepts with regards to the special effects that happen in nanotechnology. Those things you don't need to understand in detail. Okay, because those will never be asked. Those are particle physics. वो नहीं पूछेगा यूपीएससी. पर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं फिर? मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कभी एप्लीकेशन गेस करने में प्रॉब्लम ना हो. मान लो वो कोई नई एप्लीकेशन पूछ लें, कुछ ऐसी चीज पूछ लें जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी व्हाई इज इट सो स्पेशल. बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझ नहीं आता, प्लीज लेट इट गो. ठीक है, अगेन वही बात है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, राइट? वी हैव टू क्लियर द फिल्म्स. Now let's get started. So let's see the basic concepts of nanotechnology. Nanotech comes from the word nanometer. Okay, meter हमें पता है, 1 meter is 100 centimeters, right? तो मैं क्या कह सकता हूँ, that centimeter is 10 raised to power minus 2 meter. 10 raised to power minus 2 means 1 by 100. Okay, so अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो सेंटीमीटर इज 10 raised to power minus 2. तो नैनोमीटर इज 10 raised to power minus 9. मतलब 0.00 ऐसे 9 zeros या 8 zeros and 1. Okay, this is what nanometer is. यहाँ पे 8 zeros like this and then 1. इतने छोटे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं. तो जब we bring the particles to this small size, there come some special effects in them. Utilizing these special effects to make human life better is nanotechnology. You utilize these special effects and make human life better. This will be nanotechnology. Now, हमने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा था. उसमें हमने क्या किया था? I crushed a vitamin C tablet in one glass and I kept the solid tablet in one glass. What happened? The solid tablet did not dissolve even after keeping it here for 2 hours. And the crushed tablet dissolved within the first 2-3 minutes, right? So there was some change in the property due to reduction of size. अब देखो, मैं crush करके I could not have made it a nanomaterial. I could have just made it very small, maybe at centimeter level. Okay, but nanomaterial is huge crushing. To give you an example of how small nanomaterials actually are, let me tell you that if the entire population of Earth and if humans were at the size of nanometers, if humans का size, जैसे हमारा meters में size है अभी, I am 1.76 meters tall. Okay, so if human height was in nanometers, the entire population of the world would fit in one Hot Wheels car. जो ये hair है आपके, the hair, इसकी thickness, the thickness of hair, not the length, the thickness of hair is 70,000 nanometers. This is also the thickness of a sheet of paper. तो हम इतने छोटे की बात कर रहे हैं, right? We are talking about this small level when we are discussing nanotechnology. At this small level, there are certain special effects. ये special effects आते हैं at this small level. There is change in electrical conductivity. What does it mean? It means the ability to conduct electricity. जैसे अगर मैं कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो कॉपर उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा. दैट इज व्हाई वी हैव वायरिंग, है ना? वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है. बट अगर मैं रबर से पास करूं तो नहीं पास करेगा, राइट? दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिशियंस आर सपोज्ड टू वेयर रबर ग्लव्स, ताकि उनके हैंड्स को इंजरी ना हो, राइट? देन देयर आर कलर इफेक्ट्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जब मैं चीजों का साइज कम करता हूं, उनका कलर चेंज हो जाता है. कैसे होता है हम क्लास में देखेंगे. देन देयर इज केमिकल रिएक्टिविटी. ये तो हमने इसका एक एग्जांपल देख ही लिया था.
कितना रिएक्टिव है वो, कितना वो केमिकली एक्टिव है, ये चीज चेंज हो जाती है साइज चेंज करने से। जैसे हमने देखा था विटामिन सी को क्रश करने से इट वाज डिसॉल्विंग मच फास्टर, राइट? सो सम रिएक्टिविटी चेंज हैड हैपेंड, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बट यू गेट एन आइडिया। देन देयर इज चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है ये भी मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। एंड वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी मींस वाटर का अटैचमेंट एबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, ये चेंजेस हैं एट इन नैनो मटेरियल। नाउ हाउ डू दिस चेंजेस हैपन? अगेन डिस्क्लेमर, you don't need to know these concepts directly, these will never be asked। जो भी क्वेश्चन आया है वो एप्लीकेशन पे आया है, बट मेरे हिसाब से एंड आई थिंक यू विल अग्री दैट एप्लीकेशन समझने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक्स। ओनली व्हेन यू नो द बेसिक्स यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार अब ये एप्लीकेशन हो रही है, राइट? आई एम टीचिंग दिस सो दैट यू कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अब मैं आपको वापस ले जाता हूं इन योर मे बी 9th or 10th grade, you must have read a term called atom। all material, all matter, everything is composed of atoms। what does an atom look like? An atom looks like this। ये होता है उसका न्यूक्लियस। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। ये एटम है, this watch is made up of atoms, even cells are made up of atoms। I hope you can understand, atom बहुत छोटी चीज है, ये chemistry है, we are seeing the chemical constitution, this is not the biological constitution। nucleus में there are two things, neutrons and protons। ये atom से भी छोटे molecules हैं, neutron and proton। and ये जो चीजें हैं these are what do they look like? They look like orbits, right? अगेन डोंट कंफ्यूज दिस विद स्पेस टेक, बट ये ऑर्बिट जैसे ही लग रहे हैं ना। तो इन ऑर्बिट्स में थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो देयर आर थ्री थिंग्स इनसाइड एन एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एंड ये चीज, ये टर्म्स आई एम श्योर यू हैव हर्ड एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट एन एटम लुक्स लाइक। सेंटर में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इधर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने यहाँ पे पी पे पॉजिटिव क्यों लिखा है? because protons are positively charged, protons are positively charged and neutrons are neutral, तभी उनका नाम न्यूट्रॉन है। they are neutral, जीरो लिखा है देखो यहाँ पे, न्यूट्रल। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बात तो आपको पता होगी। तो किसी भी एटम में, एटम के लेवल पे द चार्ज हैज टू बी बैलेंस्ड। तो जितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे उतना पॉजिटिव चार्ज हो गया। मान लो हम बात करें हीलियम की, हीलियम इज अ गैस, इस गैस में देयर आर टू प्रोटॉन, सो इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? टू इलेक्ट्रॉन ओनली, ताकि चार्ज रहे जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हीलियम में दो प्रोटॉन है तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ताकि फाइनली जीरो रहे। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, क्या होते हैं, एंड व्हाई आर न्यूट्रॉन्स देयर? दिस वी विल स्टडी व्हेन वी आर रीडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। वो सारे कंसेप्ट यहीं से आते हैं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। देयर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देयर इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड इन द ऑर्बिट्स देयर आर द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नाउ अब देखते हैं, when we are studying the concept of nanotechnology we are considered mainly with solids। हम सॉलिड नैनो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है? ये चीज आपने देखी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या फर्क होता है? मतलब आपको फिजिकल फर्क तो पता है, बट एट द केमिकल लेवल, एट द स्मॉल एटॉमिक लेवल क्या फर्क होता है? कि सॉलिड्स में दी एटम्स आर और द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, लिक्विड में थोड़ा सा दूर, एंड गैस में बहुत दूर। दैट इज वाई सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होती है। 10 ml मींस 10 ml, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप का, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप का। और गैस की वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होती, गैस कंप्रेस कर दो या एक्सपैंड करा लो, तभी टर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। यू कैन कंप्रेस द गैस, यू कैन एक्सपैंड इट, बिकॉज एटम्स के बीच में बहुत गैप है, बहुत गैप है एटम्स के बीच में, राइट?
दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बात भी आपने पढ़ रखी होगी, मैं ज्यादा नहीं जा रहा इस पे। एंड इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स आई वुड रिकमेंड यू यूट्यूब इट और गूगल इट। बहुत ही सिंपल, दिस इज 8th 9th क्लास साइंस। ओके ओके, when atoms are packed together, when will atoms be packed together? Atoms will be packed together in the case of solid. Solid ऐसा जब होता है तो atoms get packed together. अब देखते हैं क्या हो रहा है। एटम कैसा था? एटम समथिंग लाइक दिस था, ठीक है। अब क्या हुआ? आई पैक्ड देम टुगेदर, आई ब्रॉट देम रियली क्लोज टुगेदर एंड मेनी मेनी एटम्स, मतलब ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, 100 ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते होंगे एक छोटी सी चीज में भी, राइट। सो आई ब्रॉट देम टुगेदर। व्हेन आई ब्रॉट देम टुगेदर व्हाट हैपेंड वाज कि नाउ दीज एटम्स आर दिस क्लोज, इससे भी ज्यादा क्लोज। तो अब इनके इलेक्ट्रॉन देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? देयर इज ओवरलैप, द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ओवरलैप्ड as you can see here, right? तो ये जो ओवरलैप है ना, इससे क्या होता है that all the electrons, कैसे होता है, क्या डिटेल है, is not important for you. All the electrons come together in certain layers called bands. क्या बताया मैंने? सॉलिड में एटम्स होते हैं वेरी क्लोज टुगेदर, एटम लुक्स लाइक दिस, न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दी ऑर्बिट। ये आ गए बहुत पास, सॉलिड में बहुत ज्यादा पास आ गए। तो अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होने लग गया। इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स गॉट देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स कॉल्ड बैंड्स। अभी आपको यहाँ बैंड दिख नहीं रहा होगा, बट इफ आई ड्रॉ मेनी मेनी एटम्स यू विल स्टार्ट सीइंग अ बैंड हियर, वन बैंड हियर। इन बैंड्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स अपीयर हो गए। ऑलराइट, ओके। नाउ दिस बैंड अरेंजमेंट इज साइज डिपेंडेंट। ऑफ कोर्स इफ देयर आर मेनी एटम्स, अगर मैं बहुत सारे एटम यहां पे साथ में जोड़ दूं तो जो ओवरलैप है दैट विल इंक्रीज। इफ देयर आर मेनी मेनी एटम्स सो द ओवरलैप विल इंक्रीज एंड द बैंड फॉर्मेशन विल बी मच ग्रेटर। तो बैंड फॉर्मेशन होने लग गई है। ओके, नाउ बैंड फॉर्मेशन इज हैपनिंग, एटम्स आर कमिंग क्लोज टुगेदर। ये है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। क्या है ये? बैंड थ्योरी। इट इज अ थ्योरी सिंस ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रूवन, हमने माइक्रोस्कोप में देखा नहीं है होते हुए, बट इट्स लार्जली एक्सेप्टेड कि जब सॉलिड में एटम इतने पास पास आते हैं दी इलेक्ट्रॉन्स गेट अरेंज्ड इन बैंड। ओके, क्लियर सो फार? गुड। अब देखो, यही है बैंड थ्योरी, इस जस्ट यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन है, बट इतना अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब देखो, ये है मेन चीज, ठीक है। दो बैंड बनते हैं, एक बनता है वैलेंस बैंड, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बनता है कंडक्शन बैंड। ये कंसेप्ट ही है मेन नैनो टेक्नोलॉजी में। अगर आप ये समझ गए तो सारा नैनोटेक समझ आ जाएगा अपने को। दिस इज द ओनली कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर नैनोटेक, ठीक है। क्या बात चल रही थी कि बैंड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेट अरेंज्ड इन मेनी मेनी बैंड्स। तो देयर आर टू बैंड्स, देयर इज वन वैलेंस बैंड। क्या मतलब होता है इसका? आई विल जस्ट टेल यू। द अदर बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, sorry, the other band is called the conduction band. ये भी एक सेट ऑफ बैंड है। वैलेंस बैंड इज दैट बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं टिल यू हैव नॉट गिवन देम एनी एनर्जी। आपने एनर्जी नहीं दी है उनको, तो दे विल स्टे हियर इन वैलेंस बैंड। ओके, अगर हम बैंड हटा के इलेक्ट्रॉन को देखें, अगर यहां पे हम एटम लेवल पे देखें, मैं इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं एनर्जी दूंगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इट विल मूव फ्रॉम दिस वन ऑर्बिट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज इसकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, कैसे ये होता है अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टे विद मी। ओके, आई गिव द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो इट विल मूव अप लाइक दिस। ये जो ऑर्बिट है इसको ही हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, दैट इज व्हाई द नेम वैलेंस बैंड हियर। ओके, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड में क्या है? मैंने एनर्जी नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन एनी एनर्जी, सो देयर इज द वैलेंस बैंड। अब अगर मैं एनर्जी दे देता हूं, लेट्स से आई प्रोवाइड इट विद सम एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स हियर विल मूव अप टू द इलेक्ट्रॉन हियर, दे विल स्टार्ट मूविंग अप टू द upward level, they will enter the conduction band.
कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन. व्हाट हैपेंस इन कंडक्शन बैंड? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब समझ आ रहा होगा. सॉलिड को मैंने एनर्जी दी, कॉपर को मैंने एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी. The electrons moved up into the conduction band, started flowing, and the energy also started flowing. The electrons started passing on the energy from here to that end. इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी थी, wait, I'll draw another one. इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी थी, this started vibrating, ऐसे ऐसे हिलने लगा. इसके साइड वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको भी एनर्जी मिली, ये ऐसे ऐसे हिलने लगा. ऐसे करके the vibration keeps passing on. This vibration is nothing but energy, and this flow of vibration through the electron is called electricity. इतनी बात समझ आ रही है? So अब आपको ये बात समझ आ चुकी है कि there is a वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड. यहां ब्लू कलर से बनाया है कंडक्शन, येलो कलर से बनाया है वैलेंस. अब सॉलिड में, सॉलिड्स नॉट मेटल, सॉलिड तीन तरह के होते हैं. एक होता है कंडक्टर. कंडक्टर कैसा? कॉपर. कॉपर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी, तो क्या है? कंडक्टर है वो. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इजीली. एक होता है इंसुलेटर. अगर कोई वायर है तो उसको हम कोट करते हैं विद रबर कि यार इलेक्ट्रिसिटी वायर से हमें ना लग जाए, हम वायर को टच करें तो, है ना. रबर कोटिंग होती है बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर, बिकॉज इट डज, अब कितनी भी एनर्जी दे दो वो जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू. एंड दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बिकॉज आवर बॉडी इज अ कंडक्टर. दैट इज व्हाई वी कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक. तीसरी चीज है सेमीकंडक्टर, विच इज बिटवीन दीज टू, जो है भी ऐसा कंडक्ट करने वाला और नहीं भी, समथिंग लाइक दैट. ओके, ऑलराइट. अब देखते हैं, ये तो है मेटल. मेटल में क्या दो चीजें हैं, नीचे क्या था? वैलेंस बैंड, ऊपर क्या था? कंडक्शन बैंड. अब मेटल में क्या है? देखो, देयर इज ऑलरेडी एन ओवरलैप बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड. दे आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर. सो इफ देर आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, दे विल रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम हियर. ये जंप होने में बहुत कम एनर्जी लगाएंगे. That is why they easily conduct the electricity. आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी दो, वो कंडक्ट कर देंगे, because there is an overlap between the valence band and the conduction band. This is what metal. This is insulator. Insulator में बढ़िया गैप है, बहुत बड़ा. No matter what energy you give, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जाएगा. तो you can coat a copper wire with rubber. Even if 100 megawatt of energy is passing, you will not get शॉक, बिकॉज यहां पे बैंड गैप ही इतना ज्यादा है, राइट. दिखने में छोटा लग रहा होगा, बट एट द मॉलिक्यूलर लेवल दिस इज ह्यूज, तो ये होगा ही नहीं. दिस इज द इंसुलेटर. सेमीकंडक्टर है इसके बीच में कि यार थोड़ा सा गैप है, आफ्टर अ सर्टेन लेवल द एनर्जी इज अलाउड. नॉट ऑलवेज, ये नहीं कि थोड़ी सी देते ही हो गया, और ये भी नहीं कि कभी भी नहीं होगा. सो दिस इज अ ट्रांजिस्टर, राइट. दिस इज अ मिडिल पाथ, एंड दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग इन फोन्स. व्हेन यू टच द फोन, राइट, योर बॉडी इज द कंडक्टर, द फोन के हैं सेमीकंडक्टर, उससे एनर्जी पास हो रही है एंड द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग. कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो होगा. मेटल तो तैयार ही बैठा है कंडक्ट करने के लिए, और इंसुलेटर बिल्कुल भी तैयार नहीं है. आप कितनी भी एनर्जी दे दो, इंसुलेटर विल नॉट कंडक्ट. ओके, ऑलराइट. अब है मेन नैनो टेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन. ये था सॉलिड, एटम्स थे बहुत क्लोज टुगेदर. लेट्स से दिस वाज द विटामिन सी टैबलेट विदाउट क्रशिंग इट. दिस वाज द टैबलेट जो मैंने उस ग्लास में डाली थी आपके सामने. दिस इज द टैबलेट, बिल्कुल क्लोज टुगेदर. अब मैंने क्या किया, मैंने इनको कर दिया क्रश. व्हेन आई क्रश्ड इट, व्हाट हैपेंड? पहले एटम्स बिल्कुल क्लोज टुगेदर थे. एटम का साइज कितना है? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस? यही साइज है, नैनोमीटर लेवल. तो नैनोमीटर लेवल पे जब मैं क्रश करूंगा तो क्या होगा? नैनोमीटर लेवल पे एक एटम मिल जाएगा मेरे को, एक मैक्सिमम दो. तो अब देखो, पहले क्या था? बैंड बने हुए थे, बैंड्स वर देयर. नाउ व्हाट विल हैपन? बैंड्स विल डिसअपीयर, बिकॉज अब तो वो ओवरलैपिंग है ही नहीं. नाउ द ओवरलैप इजंट देयर. यहां तो अब तो मैं इस लेवल पे आ गया ना, मैंने क्रश कर दिया उसको. जब विटामिन सी वाला टैबलेट साथ में था तो सारे एटम्स पास पास थे, बैंड्स बिल्कुल क्लोज थे.
अब मैंने क्रश करके मैं एटॉमिक लेवल पे आ गया, 10⁻⁻⁹ पे आ गया, तो एटम मिल गए मुझे। जब एटम अलग अलग मिल गए तो ये जो बैंड बने हुए थे, दीज बैंड्स आर गॉन। अब बैंड नहीं है, अब ये अलग से वही ऑर्बिट्स है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन नैनोटेक। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द बैंड लेवल टू द डिस्क्रीट ऑर्बिट लेवल। डिस्क्रीट ऑर्बिट मींस अलग अलग, discrete means alag alag. Here there are discrete orbits, here there are non discrete conjugated combined bands. ये कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। जो क्लासिकल सॉलिड मटेरियल है जैसे कि ये फोन, इसमें क्या है, इट इज अ सॉलिड मटेरियल, सो एवरीथिंग इज कंबाइंड क्लोज टुगेदर, राइट? बट व्हेन आई कम टू द नैनो लेवल दिस हैपेंस, band arrangement changes at the level of nanomaterials. Okay? अब देखो, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पहले ये बैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था और छोटा सा गैप था बीच में, राइट? बट नाउ आई हैव कम टू डिस्क्रीट लेवल्स। मैं छोटा करता गया, so the band gap will also increase and at some level the bands will disappear, right? तो क्योंकि मैं छोटा करता गया, दे आर एक्सपैंडिंग। जो ये पास पास थे, जो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप करके इन्होंने अपने बैंड क्लोज कर लिए थे, अब क्या होगा, वो बैंड दूर होने लगेंगे। Earlier they were very very closely packed, now they will become like this. So the band gap arrangement is changing. As I go smaller and smaller and smaller, the bands will go farther and farther and farther apart, and the energy gap between the band will increase. The energy gap between the band is increasing as I go smaller because I am breaking the cohesion down. कैसे हो रहा है ये नहीं समझ आया तो इट्स ऑल ओके, हमें बस आइडिया लेना था, ठीक है? अब देखो बैंड गैप वाज व्हाट, गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. दिस बैंड गैप हैज इंक्रीज्ड. नाउ द बैंड गैप हैज इंक्रीज्ड. पहले व्हाट वाज द अर्लियर सिचुएशन? अर्लियर सिचुएशन वाज कंडक्शन बैंड, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, वैलेंस बैंड. दिस वाज द सॉरी वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. दिस वाज द सिचुएशन एट द बल्क लेवल. बल्क मतलब जो हमें दिखता है, ओके? एट द नैनो लेवल व्हाट हैपेंस, दिस. छोटे हो गए वो बैंड्स, राइट? दे ग्रो फार्दर अपार्ट, so the energy gap has increased. So will not the electrical conductivity at this level change? पहले तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता था, अब ये ऑलमोस्ट इंसुलेटर बन गया, राइट? So when I make the thing smaller, its electrical conductivity has changed. This is the first change of property in nanomaterials. In nanomaterials, due to this band gap change, there is change in electrical conductivity. तो अब electrical conductivity, this is just one example, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. I am just demonstrating that change happens. कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है is not important, but you need to understand कि नैनो मटेरियल पे सिर्फ साइज छोटा करने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, तो कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज आ जाती है. फर्स्ट थिंग अंडरस्टूड? ओके. नाउ दिस चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज व्हाट? इन सेमीकंडक्टर्स देयर विल बी अ डिक्रीज. पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़िया थी, बैंड गैप छोटा था, कम एनर्जी पे भी बैंड शिफ्ट हो रहा था. अब बैंड गैप बढ़ गया तो ज्यादा एनर्जी चाहिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब बात करते हैं सेकंड चेंज, इवन मोर इंटरेस्टिंग चेंज इन कलर. अब कलर आप कहोगे यार साइज से कलर कैसे चेंज हो सकता है? अगर ये शर्ट ब्लू है तो ये तो ब्लू ही रहनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द साइज इज. लेट मी शो यू. पहले हम समझते हैं कि हम नॉर्मली किसी चीज का कलर कैसे देखते हैं. आपको ये शर्ट ब्लू दिख रही है, कैसे दिख रही है? पहले ये तो समझे हम. जब हम ये समझ जाएंगे कि ये शर्ट ब्लू कैसे दिख रही है, राइट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कलर साइज चेंज करने से कलर चेंज कैसे होता है. देखो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. ये स्टूडियो में ऊपर लगी है व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट आ रही है. व्हाइट लाइट यू मस्ट नो इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, है ना? व्हाइट लाइट इज कमिंग, इट इज हिटिंग दिस शर्ट. This shirt is then reflecting blue light and you are seeing blue light. My skin is reflecting somewhat, skin color ही कहते हैं इसको, I don't know what it's called. This watch is reflecting gold and white, है ना, and black.
दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग। अगर वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आपको ब्लैक दिखेगा। जैसे दिस बैंड इज ब्लैक बिकॉज यू सी द लाइट, इट हिट्स द बैंड अब्सॉर्ब्स ऑल द लाइट्स, राइट? तो अब आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, यू विल जस्ट सी ब्लैक कलर, ऑल द लाइट हैज बीन अब्सॉर्ब्ड। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ओके, एंड वो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, इफ आई कंबाइन ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये आप करके देख सकते हो, you will get white in the center here. So white light is nothing but the combination of these colors, okay? If white light is coming to this shirt, okay, white light is coming to this shirt, तो white light में कौन कौन से कंपोनेंट हुए? जो रेनबो की लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं, विबग्योर, ऑल द 7 कंपोनेंट्स आर देयर। इस शर्ट ने रेड भी अब्सॉर्ब कर लिया, ग्रीन भी अब्सॉर्ब कर लिया, येलो भी अब्सॉर्ब कर लिया, ऑरेंज भी अब्सॉर्ब कर लिया, वायलेट भी, इंडिगो भी, ब्लू आपको दे दिया, right? So it absorbed all the other colors and gave you the color blue. That is why your eye can see this blue. जो भी color आप world में देखते हो, this is what is happening at the physical broad level. Now let's see what is happening at the chemical level. Lower level पे क्या हो रहा है? Photon आया। Photon क्या है? Photon is the unit of light. Light consists of photons. The way electricity consists of electrons, light consists of photon. व्हाइट लाइट ही पड़ती है हर चीज पे, सनलाइट इज व्हाइट लाइट, ओके, व्हाइट लाइट पड़ी। इस फोटोन में क्या था? इस फोटोन में कुछ एनर्जी थी। लाइट इज एनर्जी, एंड अगर लाइट में एनर्जी नहीं होती, देयर वुड बी नो सोलर पावर, राइट? सो लाइट हैज सर्टेन एनर्जी, दिस एनर्जी हिट्स दिस शर्ट, दिस एनर्जी फ्रॉम द व्हाइट लाइट हिट्स दिस शर्ट। इस शर्ट में क्या हो रहा है? अगेन दिस इज अ सॉलिड शर्ट, तो सॉलिड मींस व्हाट? सॉलिड मींस वही बैंड अरेंजमेंट होगा, कैसा भी हो सकता है, बैंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बैंड अरेंजमेंट तो होगा। तो यहां पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, हम बिल्कुल लो लेवल पे देखते हैं, एक बैंड से जंप करके अगले बैंड पे चला गया, उसे एनर्जी मिली, वो एक बैंड से जंप करके अगले बैंड पे चला गया। अब अगर ये एनर्जी जो व्हाइट लाइट से मिली है, इफ दिस एनर्जी वॉज रिटेन्ड इन दिस शर्ट वुड बर्न, बिकॉज एनर्जी इज कमिंग, द शर्ट कीप्स अब्सॉर्बिंग एनर्जी, right? Energy is coming and the shirt keeps absorbing energy. So if it keeps absorbing energy, अगर वो energy absorb करती गई तो जल जाएगी। Energy जाएगी कहाँ? You must have heard that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed, right? Energy came, shirt ने absorb तो कर ली, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, and of course there are many bands here, है ना? हम बस एक बैंड की बात कर रहे हैं, okay? Now this energy cannot stay permanently absorbed. Permanent नहीं रह सकती उसके पास ये energy. It has to give the energy back. Okay? Because नहीं तो शर्ट जल जाती। अब ये इलेक्ट्रॉन था ऊपर वाले स्टेट में. Let's call this an excited state or a higher state. There were many bands like this. So now let's say 5 electrons had gone up after absorbing the energy from the white light. 5 electrons have to now come back. Now not all of them will come back to the original level. They will come back to one defined level which is characteristic of this shirt. इस शर्ट का जो सॉलिड है उसका तरीका ही है कि जब जंप करने के बाद they come back to one particular level, right? And ये कैसे होता है? Because electrons are not just 5, there are many. तो एनर्जी लेने वाले इलेक्ट्रॉन कम है और रिलीज करने वाले ज्यादा हैं. Again, I'm saying the basics are not that important, just get the idea. When it is jumping back, तो इसका एक पर्टिकुलर लेवल है जिसपे ये वापस आता है. दैट लेवल, अब ये नीचे आ गया, इसने पहले एनर्जी ली थी, फोटोन से एनर्जी ली थी, इट जम्प्ड अप हायर. नाउ इट हैज टू कम बैक, इट हैज टू रिलीज द एनर्जी, अदरवाइज दिस विल बर्न. सो व्हेन इट रिलीजेस द एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. इसने फोटोन से एनर्जी ली, ऊपर जंप किया, वापस आया, खुद भी एक फोटोन रिलीज किया. खुद जो फोटोन ये रिलीज करता है, जो उसका नीचे आने का तरीका है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस शर्ट. इस फोटोन की जो इसने रिलीज किया है, इट इज नॉट द सेम एज द फोटोन इट हैज अब्सॉर्ब्ड. द रिलीज्ड फोटोन इज डिफरेंट, एंड सिंस द रिलीज्ड फोटोन इज डिफरेंट, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी, ये रिलीज्ड फोटोन, ये आप देख रहे हो, व्हाइट लाइट से इधर आया, emitted photon, light was emitted, it came to this shirt, electrons jumped up, then electrons came back. When electrons came back, they emitted an energy, they emitted that particular photon.
फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू सी इंटू 1/λ, नॉट इंपॉर्टेंट, बट h इज अ कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दोनों चीजें तो चेंज होनी नहीं, ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज 1/λ। लैम्डा मींस वेवलेंथ। तो फोटोन की एनर्जी जो ये शर्ट रिलीज कर रही है, इट विल हैव अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ही ये फोटोन हर बार रिलीज करता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। So this photon will have a particular wavelength, and wavelength depends, like every color has different wavelength. आपने सुना होगा infrared, ultraviolet, because violet color and red color have different wavelengths. तो जो इस शर्ट की ability है to release the photon, जो इसका characteristic है, जो इसका तरीका है, जिस लेवल का फोटोन ये रिलीज करता है, that is its color, that is how you see color. If it will not emit anything, you will see it perfectly black. But perfectly black कुछ नहीं होता ब्लैक होल के अलावा, राइट? थोड़ी तो रिलीज हो ही रही होती है, नहीं तो आपको इसके पीछे का भी कुछ नहीं दिखता। यू विल जस्ट सी अ ब्लैक, यू नो, एक वैक्यूम हियर, वैक्यूम नहीं बोलना चाहिए, डेप्थ दिखेगी आपको ब्लैक में, राइट? दिस इज हाउ यू सी कलर नॉर्मली। ओके, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन हायर, इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, रिलीजेस अ फोटोन अगेन, the photon release is characteristic for a different material. This thing has different material, that thing has different material. Then the photon release happens, and then goes to your eyes and you see the color. So this is how normally color is seen. Now this was normal, this was bulk material. In bulk material, what was happening? In bulk material, the bands were like this. But what have I now done? I have made nanomaterial. So bands will be like this, very far apart. This were bulk material bands, very close. Now I have made nanomaterial. Bands are like this. Earlier what was happening? Earlier there was jumping of the electron and coming back. Now also they will be jumping and coming back. But the levels have changed. Earlier the levels were close together. Now the levels are different. So since the jumping levels have changed, the photon emitted will also change. Because these are nothing but energy levels, and photon की एनर्जी से ही फोटोन की वेवलेंथ डिसाइड होती है। जिस फोटोन की एनर्जी वो पहले इमिट करता था, अब वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू द बैंड चेंज, ड्यू टू द गैप। सो इफ यू मेक समथिंग वेरी स्मॉल, द कलर विल चेंज। कलर इज साइज डिपेंडेंट ड्यू टू बैंड गैप ऑल्टरेशंस। अगेन बिल्कुल भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। I don't know if you can see this, मैं इसको zoom कर देता हूं। This is bulk gold. Bulk gold is golden in color. If you turn it to nano gold, gold appears red. Okay, why? Because there are band gap alterations. नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, just get an idea. Band gap में change हो रहा है, फोटोन से ऊपर नीचे हो रही थी इलेक्ट्रॉन, अब ऊपर नीचे होने का लेवल चेंज हो गया। So the color level has changed. Nano gold appears red. So this is change in color, the second property of change of nanomaterials. Okay. From combined bands, the energy states become discrete. Okay. Combined band से energy state हो जाते हैं discrete, जो आपको बताया था, right? We had discussed this, that earlier it was something like this, the bands were combined, now it is discrete. So what is the impact on color? अभी आपको बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन समझ आने वाली है। पहले बैंड थे ऐसे, like this, very close. तो क्या हो रहा था? Let's say this much is the energy level for green color. ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बैंड लेवल्स हैं ये ग्रीन कलर के लेवल्स हैं। So what was happening? Some electrons were, photon was coming, एक इलेक्ट्रॉन यहां तक जाता था, यहां से यहां वापस आता था, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता था, यहां से यहां वापस आता था, एक यहां जाता था, एक यहां से यहां वापस आता था। ये सब ग्रीन ही है, बट ग्रीन का थोड़ा थोड़ा अलग शेड होगा, बहुत बहुत डिफरेंट होगा शेड, लाइक वेरी स्मॉल डिफरेंस विल बी देयर इन दिस ग्रीन एंड इन दिस ग्रीन, राइट? जंपिंग लेवल इज द सेम, कमिंग बैक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मतलब नैनोमीटर स्केल का। वो सोचो, हेयर इज 70,000 नैनोमीटर थिक, उस लेवल पे बात हो रही है। तो द जंपिंग इज, द डिफरेंसेस आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आएंगे तो सारे ग्रीन ही, बट डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन। वन विल लुक लाइक दिस, वन विल लुक लाइक दिस,
Somewhere others will look like a mixture of this. This is normal, right? This is what we see normally. Okay, but if I make it to nanoscale, तो एटम लेवल पे आ गया मैं. अब तो बैंड है ही नहीं, अब तो 2 ऑर्बिट है बस, या 3 ऑर्बिट है बस. देयर आर नो बैंड्स एनीमोर. तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इफ दे जंप फ्रॉम हियर, या चलो वील जस्ट अज्यूम 2 ऑर्बिट्स फॉर नाउ. हम मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है. अब मैं नैनो स्केल पे बात कर रहा हूं. नैनो स्केल पे लेट्स से दिस इज आल्सो द गैप फॉर ग्रीन. दिस इज आल्सो द गैप फॉर ग्रीन. वो भी गैप ग्रीन के लिए था, ये भी गैप ग्रीन के लिए. बट यहाँ पे 2 ही लेवल हैं अब, क्योंकि वी हैव कम टू द नैनो स्केल, वी हैव डिस्क्रीट लेवल्स. तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, यहीं से यहीं वापस आएगा. सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे वापस आएंगे, ये वेरिएशन नहीं होगा. तो द ग्रीन हेयर विल बी सेम. सारे इलेक्ट्रॉन सेम ग्रीन एमिट कर रहे होंगे, सो इट विल बी प्योर. इट विल बी प्योर ग्रीन, बेटर ग्रीन, राइट. दैट विल आल्सो बी ग्रीन. आपको शायद देख के उतना पता ना चले, बट दैट विल बी स्लाइटली इम्प्योर ग्रीन, राइट. नाउ दिस एबिलिटी is used in the formation of QLED, क्वांटम एलईडी. ये वर्ड आपने सुना होगा यार, QLED टीवी चाहिए. QLED टीवी में कलर्स बढ़िया होते हैं. क्यों होते हैं कलर्स बढ़िया उसमें? नॉर्मल टीवी में क्या होता है, हम 3 एलईडी टीवी की बात करते हैं. मान लो एलईडी टीवी में हम लगाते हैं 3 चीजें, एक ग्रीन एलईडी, एक ब्लू एलईडी, एक रेड एलईडी. बाकी सारे कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से होते हैं. तो जब येलो बनना होगा, जब येलो दिखाना होगा, तो थोड़ी सी ग्रीन लाइट जलेगी, थोड़ी सी रेड लाइट जलेगी, और एक येलो कलर आपको दिख जाएगा, राइट. दिस इज नॉर्मल एलईडी, ये है आम जिंदगी. ओके, बट क्यू एलईडी क्या है? क्यू एलईडी है मेंटोस जिंदगी. ओके, क्यू एलईडी है कि मैं हर कलर जनरेट करूंगा थ्रू दिस बैंड लेवल. मैं ऐसी चीजें यूज करूंगा कि आई मेक इट एट द क्वांटम लेवल. क्वांटम कंप्यूटिंग समझ करना, क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम आएंगे. क्वांटम मीन्स साइज या स्मॉल. क्वांटम एक्चुअली मीन्स वेरी स्मॉल. क्वांटम ऑफ सोलेस, वेरी स्मॉल सोलेस, राइट. क्वांटम मीन्स स्मॉल और अमाउंट. तो क्वांटम एलईडी is when I make these LEDs at the nano level. Now I have discrete levels. So I have discrete levels, so the color will be very, very pure. So when you get a QLED TV and you get an LED TV, you will see the difference. Because yahan we are using the impure colors to combine, but yahan we have discrete band levels, and हम nano level पे use करके उनको jump करा रहे हैं. So the color emitted will be very, very pure. ऐसा दिखता है QLED टीवी. इट हैज समथिंग कॉल्ड क्वांटम डॉट्स. ये टर्म याद रखना, क्वांटम डॉट्स. अभी इस पे बात करेंगे. तो QLED टीवी में ये जंपिंग हो रही है बैंड लेवल पे, राइट. इट हैज अ ब्लू एलईडी एज अ बैकग्राउंड, एंड आगे क्वांटम डॉट्स लगी होती हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ QLED. जो नैनो टेक्नोलॉजी के स्पेशल इफेक्ट्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट्स, बिकॉज दे आर साइज डिपेंडेंट इफेक्ट्स. Quantum LED is small quantum size based LED that is generating color not impure but pure color due to discrete levels. जिसके level discrete हैं, तो जो color generate हो रहा है, it is very, very pure. Okay, this is QLED TV. इसीलिए QLED TV is better. Now third property change is chemical reactivity. यार केमिकल रिएक्टिविटी तो हमने देख ही लिया था. डिस्प्रिन को क्रश करा या विटामिन सी को क्रश करके आप देख लो. मोर रिएक्शन. So more reaction means the size is decreasing, reactivity is increasing. ये भी कैसे होता है? I can show you at the molecular level. देखो, ये थी बड़ी टैबलेट, इससे वाटर को इंटरेक्ट करना है ना. हम ऐसे मानते हैं कि वाटर को यहाँ इंटरेक्ट करना है. अब इसके अंदर है देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल या एटम. ये इस चीज में फर्क बताऊंगा मैं आपको कभी, ठीक है. मान लो बहुत सारे एटम्स हैं ऐसे, दे आर पैक्ड लाइक दिस. तो एक टाइम पे वाटर सिर्फ इन एटम से इंटरेक्ट कर सकता है, दैट आर एट द सरफेस. ऐसे अंदर वाले एटम्स का क्या हुआ? उनसे तो इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा. जब ये घुल जाएंगे, जब बाहर वाले घुल जाएंगे, तब अंदर वालों से इंटरेक्शन होगा इन अ टैबलेट. बट इफ आई क्रश द टैबलेट, व्हाट हैपेंस? इफ आई क्रश द टैबलेट, इट बिकम्स लाइक दिस. तो अब देखो, नाउ द वाटर, इट विल गेट टू इंटरेक्ट
with all the atoms at once, तो जो डिसोल्यूशन होगा इट विल बी मच क्विकर. दैट इज वाई क्रस्ट वाली जल्दी घुल जाती है, बिकॉज द सरफेस एरिया, यहां पे क्या है, सरफेस देखो इसका, सरफेस इज दिस, सिर्फ सरफेस जो है उसी पे ही इंटरेक्शन हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा. सरफेस एरिया यहाँ पे छोटा है बिकॉज अंदर वाले एक्सपोज नहीं है. मैंने बढ़ा दिया तो द सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड बिकॉज आई हैव even taken out the atoms from inside. Since the surface area has increased, the reactivity will also increase. Again, छोटा करूंगा, surface area बढ़ेगा. So what will happen? Change in chemical reactivity. Another change of nanotechnology. ठीक है, more surface area, more reaction. And one CSAT question for you. कर लेना ये. क्यूब ऑफ साइड विद 4 सेंटीमीटर वर्सेस क्यूब ऑफ साइड विद 1 सेंटीमीटर, इनका सरफेस एरिया कंपेयर करना है एक बार. एंड 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब कैन फिट इनटू साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर. अभी नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट. सीसैट इग्नोर नहीं करना है. ये नहीं कि जीएस में साइंस एंड टेक भी कर लिया, एनवायरमेंट भी कर लिया, पॉलिटी और इकोनॉमी में यू आर गुड, यू आर गेटिंग 100+ एंड यू फेल इन द सीसैट. आज जो वीडियो डाली है सुबह, उसमें बताया है कि सीसैट से कैसे डील करना है लास्ट के कुछ डेज में, एंड देयर विल बी वन मोर वीडियो सून. So please focus on that also. Okay. Change in properties discuss कर रहे थे. This is change in property due to change in size, known as quantum effects. Quantum effects are size dependent. Size dependent. Now, another concept here is quantum confinement. बता देता हूं, but याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, when the bands were close together, okay, when the bands were close together, यहां the electron needed very small energy to jump from one to the other. Okay, very small energy was needed to jump from one to the another. तो थोड़ी सी एनर्जी मिलके भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकता है. बट when the bands become farther apart, right, in this case a lot more energy is needed. So now the electron cannot easily jump. So if the electron cannot easily jump, the electron has been confined, jailed, stopped, restricted, रोका जा रहा है उसको to go from one side to the other. So this is called quantum confinement, size dependent stopping of electron from jumping from one band to the other. Quantum confinement. Okay, समझ आ गया. चलो, लास्ट चीज रह गई थी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. ये एक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस नहीं की, ये भी बता देते हैं. देयर इज अ मेटल बॉल दैट यू हैव टू मेल्ट. आपने इसको आग लगानी है, इसको मेल्ट करना है. अगेन, इफ यू वांट टू मेल्ट इट लाइक दिस, राइट, यहां से आप एनर्जी लगा रहे हो तो सिर्फ सरफेस पे एनर्जी टच होगी पहले. तो आप क्या करो, आप इसको छोटे छोटे बॉल्स में बांटो, and now you give the energy, so energy will go at much larger interaction, surface area बढ़ जाएगा. सीसैट कर लेना, इसलिए बता रहा हूं, जब ऐसे करते हैं वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट, सरफेस एरिया इंक्रीजेस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीसैट. ओके, अब ये हो गया. नाउ इफ दिस हैज हैपेंड, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट मेल्टिंग विल हैपन इजियर. यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अंदर तक पहुंचने के लिए, और यहां क्या है, कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा. तो मेल्टिंग पॉइंट विल रिड्यूस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, दैट विल रिड्यूस. ये समझ आ गया कि चेंज इन प्रॉपर्टीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ आ गया. अगर नहीं समझ आया है कि व्हाई द चेंज इज हैपनिंग, इट्स ओके. ठीक है, बस इतना समझ लो कि कुछ तो समझ आया ही होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते हैं, राइट. देयर इज क्वांटम कन्फाइनमेंट, देयर इज बैंड थ्योरी, समथिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. जस्ट अंडरस्टैंड दैट द चेंज इन प्रॉपर्टीज इज साइज डिपेंडेंट. ओके, ऑल राइट. सो अब तो हमने समझ लिया कि नैनो मटेरियल्स में क्या नई प्रॉपर्टीज आती हैं. ओके, अब देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स में कैसे नैनो मटेरियल्स को बनाया जाता है. हाउ आर दे मेड? सबसे आसान तरीका है, एक बड़ा ही चीज लूं और उसको काट के छोटा कर दूं, क्रश कर दूं. दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू मेक नैनो मटेरियल्स. दिस इज कॉल्ड टॉप बॉटम अप्रोच, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. ये टर्म आपने गवर्नेंस में भी पढ़ी होगी. गवर्नेंस में व्हाट इज द टॉप बॉटम अप्रोच? दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट
is giving certain instructions to the states, to the local bodies without listening to them. It is a top bottom approach. At the center you say, okay, this is how the health system has to be, right? Regardless of वहां tribals हैं, वहां scheduled caste हैं, वहां women की concentration ज्यादा है, women की population कम है, anemia ज्यादा है कहीं जगह, कहीं पे anemia कम है, कहीं पे genetic disease ज्यादा है. You just say from the top that okay, you know, this is how the health system has to be. This is a bad approach of governance, from the top to the bottom, from the big to the small. What is the better approach of governance? You ask every small tribal hamlet, every small village to make a plan on its own, and then you bring them together. Okay, aap batao, what are the challenges in your area? And you know, I will help you deal with those challenges. Local challenges are different, right? This is bottom up approach. If I go from small, even smaller, 10 raised to power minus 9 से भी छोटे, if I go from 10 raised to power minus 12 to make this will be bottom up approach. Right now हमारे पास ये ability नहीं है कि हम इतने छोटे इस पे जाएं, right? We cannot go to this small. हम nano material पे मुश्किल से पहुंचे हैं. So this is right now an idea of the future. It is a future prospect. But I'm sure with the pace of technological development, we will achieve this also. So two approaches, top to bottom and bottom to top. समझ आ गया? Bottom to top approach will be used when we are discussing 3D printing, additive manufacturing. याद रखना ये हम डिस्कस करेंगे उसको emerging technologies में, तब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है. Additive manufacturing, right? यहाँ पे कुछ examples लिखे, you can read them. इसमें मैं नहीं जा रहा. Okay. अब एक चीज वो health वाला example बीच में रह गया था. I was saying that I will ask every tribal hamlet, I will ask every village make a plan. So what am I doing? I am doing decentralization, democratic decentralization. I am asking every small body to, okay, you make your own plan and tell me. You make your own plan and tell me. There will be no central authority. There will be decentralization. From bottom, I will take the inputs and combine them at the top, rather than sitting at the top in an ivory tower and dictating my terms. ये गवर्नेंस के आंसर में जरूर यूज करना. बॉटम अप अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग, 1 मार्क एक्स्ट्रा. ओके, टॉप टू बॉटम समझ आ गया, बॉटम टू टॉप समझ आ गया. छोटों को यूज करके, इससे भी छोटों को यूज करके ये बनाना है, राइट? ओके, अब आते हैं जनरेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स. आईफोन की भी जनरेशंस हैं, 12G, 13G, 14 भी आ गया अब तो. So generations of nanomaterials. What is the first generation? The first generation is passive structures. Passive means कि मैंने coating कर दी. If I just did coating, if I made polymers, this would be passive nanomaterials. जैसे मैं इस बोर्ड पे एक nano coating कर दूं, उसकी कुछ special properties होंगी. जैसे if you coat a shirt with nanomaterials, it will not get wet. कहा था ना, wettability is different. आती नहीं, वो एड भी देखा होगा कि शर्ट पे इफ यू पोर वाटर, उसमें पानी लगता ही नहीं है, द वाटर जस्ट बाउंसेस ऑफ. एंड वी हैव रेड दैट साइज व्हेन इज स्मॉल, इट देयर कैन बी सम चेंज. सो दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर, कोटिंग, राइट? सेकंड जनरेशन इज एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर. एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर मींस व्हाट? एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर मींस दैट इट इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. इसमें आती है समथिंग कॉल्ड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. दिस वी विल सी टुडे. कि ऐसे नैनो स्ट्रक्चर्स दैट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. दिस इज सेकंड जनरेशन, एक्टिव. फर्स्ट वर पैसिव. थर्ड जनरेशन, थर्ड इज इंटीग्रेटेड नैनो सिस्टम. इंटीग्रेटेड नैनो सिस्टम मींस कि द एंटायर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम मींस सम बॉडीज दैट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. जैसे दिस बोर्ड इज अ सिस्टम, इसमें दिस पेन इज इंटरेक्टिंग विद द बोर्ड टू मेक सर्टेन चेंजेस. तो थर्ड जनरेशन है कि सारे सिस्टम ही, पूरा सिस्टम नैनो स्केल के लेवल पे हो रहा है. दिस इज थर्ड जनरेशन. आपको सिर्फ ये टर्म्स याद करने की जरूरत है, बाय द वे. एंड लास्ट इज मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम. मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल से, नैनो से भी छोटे लेवल से बना रहे हैं. तो फोर्थ जनरेशन को हम कौन सी अप्रोच कहेंगे? प्लीज राइट इन द कमेंट्स कि फोर्थ जनरेशन जिसमें हम नैनो से भी छोटे मटेरियल्स को यूज करके नैनो मटेरियल बना रहे हैं, व्हाट विल वी कॉल दैट? दिस इज बॉटम अप अप्रोच. In this bottom up approach, I am making a molecular nanosystem. I am going from the molecular level, and this will be done when we understand additive manufacturing. कि कैसे होता है, छोटी चीजों से बड़ा कैसे बनाया जाता है. Additive manufacturing is 3D printing. When we see 3D printing, then we will see. Okay, तो 4 generations हो गए. Okay, now 2016 में the chemistry Nobel Prize
was given for making a third generation nano system. जो integrated nano system था, this was given to these scientists, Professor Stuttgart, Professor Sauvage and Professor Feringa, right? These three, they got it for making a third generation nano system. What they made was a nano lift. कैसे काम करती है absolutely not important for you, just telling you that they had made a nano lift. So this will be what, third generation system. तो third generation के लिए अभी Nobel Prize मिला है. So we are slightly far away from the fourth generation. अभी चल रहा है वहां पे, we are still researching it. Okay, now we are talking about the types of nanomaterials. But before I talk about the types, when is something called nanomaterial? When is it called nanomaterial? Does it have to be 1 nanometer to be called nanomaterial? No, it has to be in the range of 1 to 100 nanometer. This range, when it gets to the range of 1 to 100 nanometer, at this range special effects start and it is called a nanomaterial. इस रेंज में अगर कुछ होगा, अब आगे देखते हैं. देखो, अगर ये क्यूब है, इसकी 3 डायमेंशन हैं, तो आपको पता होगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. दिस इज सेम इन अ क्यूब, तीनों चीजें सेम होती हैं. बट इन एनी क्लासिकल मटेरियल, लेट्स से दिस बॉटल, इट हैज अ लेंथ, it has a length, it has a breadth, or let's say it has a length, it has a breadth, it has a height, right? 3 चीजें हैं, 3 डायमेंशन. अगर एक डायमेंशन, जैसे मैंने क्या किया इस केस में, मैंने लेंथ जो थी इसकी, लेंथ को मैंने कंप्रेस कर दिया, ब्रेड्थ भी है इसकी, it is broad like this, height भी है. So if I do like this will be called a 1 nano dimension material. I have only put the length in nano dimension, nothing else. So this will be nano dimension, means this is nano dimension, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में. तो मुझे दिखना तो बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो हेयर का थिकनेस ही मुश्किल से दिखता है, और वो 75,000 नैनोमीटर है, तो ये तो 100 नैनोमीटर से कम है. सो आई विल नॉट सी इट, राइट? सो आई विल सी ओनली ब्रेड्थ एंड हाइट. दीज आर इन क्लासिकल डायमेंशन, बट द लेंथ इज इन नैनो डायमेंशन. तो एक मैंने नैनो डायमेंशन कर दी, दिस इज कॉल्ड अ क्वांटम वेल. क्वांटम समझ आ रहा है? वेल ऐसा दिखता है, राइट? It is like a sheet, very thin sheet, very thin sheet, because length तो मैंने वैसी कर दी. Second, I made 2 dimensions. मैंने length और breadth दोनों को nano dimension में कर दिया. I made length also into nano dimension, I made breadth also into nano dimension. It became a wire. ऐसा हो जाएगा. सिर्फ height है इसकी. अब this is a quantum wire, 2 nano dimensions. सिर्फ नाम याद करने हैं, कुछ नहीं इससे ज्यादा करना है यहाँ पे. Third is 3 nano dimension. मैंने तीनों को ही छोटा कर दिया, तो कैसा दिखेगा? ऐसा. इट विल लुक लाइक अ डॉट, बिल्कुल छोटा. दिस इज कॉल्ड क्वांटम डॉट. क्यू डॉट्स आर यूज्ड इन क्यूएलईडी टीवी. ओके, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ नैनो डायमेंशंस. दिस इज क्लियर? अब आते हैं एप्लीकेशंस पे. बट अब ये बहुत आसान है. इट विल नॉट इवन टेक 10 मिनट्स, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड कि पीछे क्या हो रहा था. तो यहां अब आपको समझ आ जाएगा, राइट? एप्लीकेशंस देखते हैं. पहला है नैनो फर्टिलाइजर. भाई मेरे हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना. ये एक्चुअली लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है. लास्ट ईयर इट वाज नॉट आस्क्ड एंड नाउ दे हैव जनरेटेड अ हैबिट ऑफ आस्किंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग हियर आल्सो. इट इज इंपॉर्टेंट. हुआ क्या है कि हमने क्या किया है, हमने बना दिया नैनो यूरिया लिक्विड. जस्ट होल्ड ऑन. हमने बना दिया नैनो यूरिया लिक्विड. व्हाट इज नैनो यूरिया लिक्विड? नैनो यूरिया लिक्विड मींस हमने यूरिया को नैनो स्केल पे ले आए हैं. इट हैज नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स. यूरिया इज अ वेरी कॉमन फर्टिलाइजर. वी हैव नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स. ठीक है. एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली, जब एमसीक्यू के लिए पढ़ते हैं ऐसी चीजें हाईलाइट करते हैं, बिकॉज ये वहां पे डाउट होगा इसमें. नैनो फर्टिलाइजर पढ़ के आपको अब नैनो टेक्नोलॉजी पता है, यू विल गेट एन आइडिया कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी यार, है ना? बट दिस यू विल मेस अप कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू प्रोड्यूस अ नैनो फर्टिलाइजर. ओके, किसने बनाया ये? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राइट? दे हैव साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इफको, राइट? तो दिस इज नैनो यूरिया लिक्विड. दिस इज नैनो स्केल पे हम ले आए नाइट्रोजन को. यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसको हम ले आए नैनो स्केल पे. एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली. अब बताओ क्या होगा? रिएक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड. relative surface area has increased. वो the urea has now transformed from the tablet to the crushed vitamin C. क्रश हो गया विटामिन सी, छोटा हो गया, सॉल्ट जैसा बन गया.
तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि अगर पहले मुझे 10 ml पानी में 1 ग्राम यूरिया डालना पड़ता था फॉर द रिक्विजिट अमाउंट, अब वो 10 ml में आधे ग्राम से भी काम चल जाएगा, या इससे बहुत कम से भी काम चल जाएगा, मे बी 0.1 ग्राम से भी काम चल जाएगा, बिकॉज ये 1 ग्राम घुलता ही नहीं था इस 10 ml में, बहुत कम घुलता था, बट ये तो 0.1 ग्राम भी उतना ही घुल जाएगा, राइट? So it will reduce the requirement of conventional urea by 50% or more. Why? Because it's more reactive, more soluble. It will improve the soil, air and water quality. Why? Because first I was using 1 gram. Plant was getting out of this also 0.1 gram. Now I am using 0.1 gram. Plant is still getting 0.1 gram. Because reactivity has increased, properties have changed. तो soil पे तो impact कम हो गया, requirement भी कम हो गई। अब एक और चीज जो आप एमसीक्यू में गलत करोगे, जिसको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज चीपर। ये है कमाल की बात, इट इज चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, राइट? आई हैव पुट दिस आल्सो हियर। ये पॉइंट्स आपको एमसीक्यू के टाइम पे याद रखने होते हैं, बिकॉज दिस यू विल गेस, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, इट हैज टू बी बेटर देन द ओल्ड वन ना। यू कैन नॉट से दैट ओके वी हैव मेड नैनो फर्टिलाइजर, इट इज लेस एफिशिएंट देन द ओरिजिनल फर्टिलाइजर, फिर बनाया क्यों? बट इट इज चीपर। You are likely to mess this up. These things you have to highlight. Now the next thing is triboelectric nanogenerators. नाम से मत डरना, right? Word breakdown करना, जब ऐसा नाम दिखे तो do a word breakdown. Generator पता है? Generator तो सुना है? What does generator mean? Generator mean anything that is used to generate electricity. Nano generator, nano scale पे generator होगा. It must be very small, nanotechnology है. And triboelectric, okay, you might not know the word of this meaning, but it is an electric generator. It is an electric generator at the nano level. What does it do? It is made by this organization. This you can read from the slide. I am not going into this, right? नाम है बस organization का। इसकी अच्छी बातें क्या है? It is cost effective. It is biocompatible nano generator. करता क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट है इन द एनवायरमेंट, फ्रॉम दैट it generates electricity. कैसे? Not important, but कर लेता होगा since those properties were changing, right? Must be able to do something at that level. We don't need to understand the mechanism. We just need to understand that nanotechnology is capable of this, right? So mechanical energy it takes from the environment and generates electricity. अब it is the principle is creation of electrostatic charge. Again, not important. Electrostatic is that positive and negative charge. जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, हमें पता ही है कि वो इलेक्ट्रॉन की बैंड गैप चेंजेस हो रहे हैं. सम चेंजेस इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मस्ट बी हैपनिंग फॉर इट टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. दिस इज अ ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर. अब इसकी बातें क्या हैं? पहली बात है ये बायोकंपैटिबल है. बायोकंपैटिबल मीन, अगेन वर्ड ब्रेकडाउन, बायो मतलब बायोलॉजिकल या बॉडी या ह्यूमन वैसा कुछ होगा, एंड कंपैटिबल मतलब कि उसे यूज किया जा सकता है. So it can be used inside the body. What is the property of your body that stops a foreign thing from being non-biocompatible? सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में which stops a foreign thing from being biocompatible? That property is nothing but immunity. You will react against foreign bodies. तो ऐसी बनानी पड़ेगी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना करे. Only then it can be used. Okay? So it is biocompatible. तो इसकी एप्लीकेशन यहाँ लिखी हैं. Obviously जब इस तरह की कोई चीज आ जाती है, think wide in terms of applications. It can do a lot of things. Unless ये कह दे that it will solve the Ukraine crisis, right? It can do a lot of things. But इसकी जो सबसे important application है वो pacemaker है. What is a pacemaker? देखो हमारा जो हार्ट होता है, we have the heart that we have, right? I am drawing it like this. It has 4 chambers. That's not important. Our heart generates its own impulses for contraction. So if I take your heart and I cut all the nerves, it will still keep contracting. क्योंकि वो अपने अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके खुद को ही like it contracts itself. So if I get a material like a triboelectric nano generator that can take mechanical energy from outside and generate electrical impulses, it will make the heart conduct. It will make the heart beat for those people जिनकी ये natural electrical generation impulse खराब हो गई है.
That is why it can be used as a pacemaker. It makes the pace of heartbeat. वर्ड ब्रेकडाउन क्या करो, हार्टबीट की जो पेस है वो हार्ट अपने खुद से इलेक्ट्रिसिटी से रेगुलेट करता है, वो खराब हो जाए तो मैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि ये वाइब्रेशन से काम करता है, इट जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेशन। वायर तो नहीं लग सकती ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हार्ट के अंदर, तो यू नीड समथिंग लाइक दिस। सेकंड, इट इज बायोकंपैटिबल, दैट इज व्हाई आई कैन यूज इट। नहीं भी समझ आ रहा तो जस्ट लीड द स्लाइड, दिस मच इज इनफ। अब बात करते हैं नैनोमाइसेल्स। Nanomaterials are something that can be talked about in the terms of targeted drug delivery also. इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि माइसेल्स क्या होते हैं, तभी तो आप नैनोमाइसेल समझोगे। माइसेल्स आर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स विद हाइड्रोफिलिक आउटर शेल एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगेन वी विल डू वर्ड ब्रेकडाउन। हाइड्रोफिलिक, फिल आपको बताया था लव होता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स फियर, मेरे को फोबिया है प्रीलिम्स का, राइट? तो ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसे दिखते हैं। यहां तो होता है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज वाटर अट्रैक्टिंग, इट अट्रैक्ट्स वाटर। ये होता है लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड या फैट जो है वो पानी से दूर भागता है। आप फैट या कुछ भी फैटी चीज आप पानी में मिला के देखो, वो डिसॉल्व नहीं होती। ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, राइट? बट सॉल्ट जो होता है उसमें फॉस्फेट सॉल्ट होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक। ओके, अब ये चीज ऐसी कुछ हमने सेल में भी नहीं देखी थी व्हेन वी वर रीडिंग सेल मेम्ब्रेन। ऐसा ही तो था वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो नैनोमाइसेल का पॉइंट क्या है? नैनोमाइसेल सेल के लेवल पे पहुंच जाएगा एंड इट विल गेट पास्ट द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली परमिएबल एबिलिटी थी उससे ये पार निकल जाता है। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर ड्रग डिलीवरी। अब वाई आर बी यूजिंग इट फॉर ड्रग डिलीवरी? ये कर तो सकता है, ये हमें समझ आ गया, ये निकल जाएगा पास्ट द सेल मेम्ब्रेन, बट वाई नैनोमाइसेल? क्यों बनाना है? नॉर्मल ड्रग्स भी तो हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये आपकी बॉडी, आपने यहां पे खाई एक ड्रग, लेट्स से पैरासिटामोल। पैरासिटामोल कहां गई? पहले गई स्टमक में, स्टमक से गई ब्लड में। पैरासिटामोल का काम क्या है? सर दर्द मिटाना, करेक्ट? ब्लड में गई, ब्लड से जाएगी ब्रेन में। बट ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड से सिर्फ ब्रेन में जाएगी। ब्लड इज गोइंग टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर पैरासिटामोल में ब्लड है, सॉरी ब्लड में पैरासिटामोल है, तो इट विल गो टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ना। ब्रेन में भी जाएगी, ब्रेन में अपना काम करेगी, बट किडनी में भी जाएगी, लिवर में भी जाएगी। किडनी में उसका कोई काम नहीं है, किडनी में वो क्या कराएगी? साइड इफेक्ट। इसीलिए कोई भी दवाई बना लो, साइड इफेक्ट होगा ही होगा, बिकॉज आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जहां आपने पहुंचना है, बट पहुंचने का तरीका ब्लड है जो हर जगह जाता है। सो यू व्हेन यू आर मेकिंग मेडिकेशन यू हैव टू मेक इट इन सच अ वे कि इस ऑर्गन पे तो ये इंपैक्ट करे, बाकी कहीं भी कोई इंपैक्ट ना करे। इसीलिए न्यू मेडिकेशन डेवलपमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये साइड इफेक्ट हो रहा है। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता जो सीधा यहां से जाता ब्लड में और यही डिलीवर होता, जाता ही नहीं कहीं और, तो दैट वुड बी कॉल्ड targeted to the organ where I want to get to, drug delivery. And for targeted drug delivery we use nanoparticles like nanomicelles for drug delivery. करना क्यों है ये समझ हो गया? कैसे कर रहा है ये? Because it has that same structure. बाकी I will expect that you will read this slide and I am not going into this very basic thing that is written here. You have understood the concept. I am expecting from you that you will just read this slide once. Now gold nanoparticle, GNP. Again it has been made by the National Center for Polar and Ocean Research along with Goa University. They have synthesized this. इसकी क्या स्पेशलिटी पता चली हमें? Because it is nanoparticle, कुछ तो स्पेशलिटी होगी. It is biocompatible. It has a high surface area.
वो बात भी आपको समझ आ रही होगी, ये बात भी आपको समझ आ रही होगी। मोर स्टेबिलिटी, नॉन टॉक्सिक एंड मेल्टेड एट मच लोअर टेम्परेचर, ये बात भी समझ आ रही है। दीज आर इट स्पेशल प्रॉपर्टीज। कहां यूज करते हैं? इसमें एबिलिटी है टू अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन, तो कहां यूज करेंगे? इन फोटोवोल्टेइक सेल। अब देखो, फोटोवोल्टेइक सेल है सोलर सेल, और सोलर रेडिएशन अब्सॉर्बिंग की एबिलिटी क्यों इसमें ज्यादा होगी वो आपको समझ आ ही रहा है। लाइट जब कलर चेंज हो रहा था तो सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब भी तो चल रहा था वहां पे, तो सम डिफरेंस मस्ट बी देयर, राइट? तो इट इज यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल। इट हैज सर्टेन यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, वो भी हम देख चुके हैं। ऑप्टिकल मींस आई रिलेटेड, मतलब कलर जैसा। तो हम इमेजिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, जैसे कि सीटी स्कैन, so there we can use this. And electronics, because obviously there must be some change in its electrical conductivity as it is a nanoparticle, so we are using it as a NOMFET. What is a NOMFET? A NOMFET is a nanoparticle organic memory field effect transistor. बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब समझ लो। ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर मींस कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अदर नर्व सेल। दिस इज हाउ इट हैपेंस। बीच में होता है एक साइनैप्स, यहां से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो ये इसी जैसा कुछ करता है, इट मिमिक्स दैट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बट अगर आप बस इतना याद कर लोगे कि जीएनपी को इसमें यूज करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, काम चल जाएगा। ये जीएनपी के बारे में है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नैनोटेक पे क्वेश्चन आ गया तो दिस कैन, यू कैन मेक दिस एज अ डायग्राम कि अभी अभी गोल्ड नैनो पार्टिकल बना है और इसमें हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, हम वायरस यूज कर रहे थे तो डिलीवर एमआरएनए, है ना, या डीएनए, वी वर यूजिंग वायरस। अगर हमारे पास नैनो पार्टिकल्स मिल जाए ऐसे स्पेशल जिनको हम कंट्रोल कर सकें, वो इतने छोटे हैं कि वी कैन पुट देम इनसाइड वेयर वी नीड देम, राइट? तो इट कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। एंड ये चीज आपकी यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है, यू कैन जस्ट रीड दिस वंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेनी स्फीयर्स। इस एप्लीकेशंस में नैनो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है एनेबलिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट एनेबल्स अस टू मेक एवरी अदर टेक्नोलॉजी बेटर। नैनो टेक्नोलॉजी से आप ड्रग डिलीवरी कर रहे हो, आप नैनो टेक्नोलॉजी से मेडिसिन बेटर कर रहे हो, तो व्हाट डिड यू डू? यू मेड बायोटेक एंड हेल्थ बेटर, so you have enabled biotech and health to be better used. आपने उससे इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिए, आपने उससे कंज्यूमर प्रोडक्ट बना दिया, आपने स्पेस टेक में उसको यूज कर लिया, so you are enabling the better use of all of these. यही तो है, so this is enabling technology. Okay, all right. अब बात करते हैं कार्बन नैनो मटेरियल्स की। कार्बन के बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि डायमंड, जैसे कि कोल। ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल, ऑल ऑफ देम आर कार्बन ओनली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और इन डिफरेंट फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रोप। यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म, ये स्लाइड में नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन। दे आर कॉल्ड एलोट्रोप, एलोट्रोप। ओके, ऑलराइट। अब कार्बन नैनो मटेरियल्स कौन कौन से हैं? वन इज बकमिंस्टर फुलरीन। क्या होता है बिल्कुल याद मत करो, बस याद कर लो कि इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। फिर पढ़ेंगे हम कार्बन नैनो ट्यूब, फिर हम पढ़ेंगे ग्राफीन। बकमिंस्टर फुलरीन, जस्ट रिमेंबर बकमिंस्टर फुलरीन क्यों नाम है इसका? इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, मिस्टर बकमिंस्टर फुलर, राइट? तो बकमिंस्टर फुलरीन इज अ कार्बन का एलोट्रोप। डायमंड इज द सेम, ग्राफाइट इज द सेम। कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन इज टेकिंग इट एट द नैनो लेवल। लेट्स सी दोस। ओके, कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? What is a tube? Tube is something like this ना, अभी बस इतना याद करो, ऐसा लंबा, यही तो होती है ट्यूब। इससे पहले, बिफोर वी अंडरस्टैंड कार्बन नैनो ट्यूब्स, वी विल अंडरस्टैंड ग्रेफाइट एंड ग्राफीन। देखो, ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ओके, इट एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस इन लेयर्स, ऐसे लेयर हैं ग्रेफाइट में ना, समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट शो यू so that you don't have to rely on my terrible drawing. See, this is graphite. Graphite is at R level, हमें graphite दिख सकते हैं, graphite is used also, right? This is graphite, कार्बन का एलोट्रोप, many layers। अगर मैं इसमें एक लेयर ले लूं, one single layer, it will be called graphene। graphene,
So graphene will be what? Graphene is 2D. This was 3 dimensional. ठीक है, 3 dimensional, ऐसे भी था, ऐसे भी था, ऐसे भी था, right? So it is 3 dimensional, length, breadth, height. It has 3 dimensions because it has multiple layers. That is graphite. If I take just one layer, just one sheet, it will become 2 dimensional. This will be called graphene. If I roll up the graphene, I will form a single walled carbon nanotube. If I roll up the graphite, I will form a multi-walled carbon nanotube. I hope the things are now clear. तो देखो यहाँ क्या लिखा है, graphene is 2-dimensional graphite because graphite is in layers. If I take just one layer, that is the graphene, and graphene is used for flexible touch screens. How? Not important. Graphene is used for flexible touch screens. Now we come to carbon nanotubes. कैसे बनती हैं देख लिया. It can be single walled and multiple walled. अगर आप ग्रेफाइट से बनाओगे तो मल्टी वॉल्ड, आप सिंगल लेयर ग्राफीन से बनाओगे तो सिंगल वॉल्ड. They are lightweight, they have good tensile strength, they can bear load. कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो चेंज हुआ ही होगा. अब लोड बेयरिंग है, स्ट्रेंथ बेटर है, इलेक्ट्रिकल बेटर है, वेट कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होंगी, ऑटोमोबाइल में, स्पोर्ट्स में, बहुत जगह यूज होंगी. प्रॉब्लम क्या है, बायोकंपैटिबल नहीं है एट द लेवल ऑफ बॉडी. दे आर नॉट बायोकंपैटिबल. ओके, बायोकंपैटिबल का क्या मतलब है कि बॉडी इससे इम्यून रिएक्शन कर देगी अगर आप इसे ज्यादा टाइम की बॉडी के अंदर छोड़ोगे. तो दे आर नॉट बायोकंपैटिबल. ओके, डन. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कहां कहां यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी. देखो यार, मैं आपको एक स्लाइड पढ़ के दिखा देता हूं, बट आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम बिकॉज ये मेंस के लिए है. पहली बात तो जस्ट कीप देम फॉर द मेंस. आपको एग्जांपल पता होने चाहिए. जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर सनस्क्रीन. फर्नीचर की कोटिंग में हम यूज कर सकते हैं नैनो मटेरियल, तो आग कम लगती है क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी में कुछ चेंज आता होगा, राइट. बॉडी आर्मर की हम कोटिंग कर सकते हैं, ग्लास की हम कोटिंग कर सकते हैं. क्वांटम डॉट्स तो आपको पता ही है, QLED टीवी में यूज होती हैं, राइट. तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, यहाँ में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, जस्ट रीड देम. एनवायरमेंटल रीमीडिएशन, रीमीडिएशन हम पढ़ चुके हैं. ऑयल्स, वेपर, बैक्टीरिया भी पढ़ा था हमने. नैनो सेंसर मतलब हम बहुत स्मॉल लेवल पे एक सेंसर बना दें जो छोटे से छोटे पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई कर दे. नैनो मेम्ब्रेन मतलब हम इतनी छोटी मेम्ब्रेन बना दें जिसमें छोटे से छोटा पॉल्यूटेंट भी निकल ना पाए. तो एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं. इंडस्ट्री में हमने देख लिया एप्लीकेशन, एनवायरमेंट में देख ली, बायोटेक्नोलॉजी में तो हम देख ही रहे थे, एनर्जी में देखते हैं. बायोफ्यूल्स ये हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, वी आर डूइंग द एनवायरमेंट कोर्स. उसमें यू कैन डू सम नैनो इंजीनियरिंग टू चेंज द एंजाइम्स. अभी यहाँ पढ़ लो, व्हेन वी डू बायोफ्यूल्स आई विल एक्सप्लेन इट. ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम इसे सोलर पैनल में यूज कर सकते हैं. गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इसको हम पेसमेकर में भी यूज कर सकते थे. दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सोलर पैनल. अगेन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो ब्रॉड सोचना है, ब्रॉड. गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को हम यूज कर सकते थे. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या होता है एनवायरमेंट कोर्स में बताऊंगा, दैट कैन बी यूज्ड. कार्बन नैनो ट्यूब में कंडक्टिविटी बेटर है तो उसको यूज कर लो आप सोलर पैनल में. ग्राफीन को आप यूज कर लो फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन के लिए. ग्राफीन को आप यूज कर लो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए. लिखा हुआ है बट व्हेन वी डू ग्रीन हाइड्रोजन आई विल एक्सप्लेन. ओके, देन एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर आर नैनो हर्बिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड. जैसे हम अपने लिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर रहे थे, हम वहां पे भी नैनो लेवल पे कर देते हैं. कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आ रहे होंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू नीड टू थिंक ब्रॉड. मेंस में इससे थिंक ब्रॉड से काम नहीं चलेगा, मेंस में एग्जांपल देने पड़ेंगे. तो अब नीचे एग्जांपल लिखे हैं. नैनो फास्फोरस का फर्टिलाइजर मिलेट में यूज होता है. सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं अगेंस्ट फाइटोपैथोजेंस मींस प्लांट पैथोजेंस. कार्बन नैनो पार्टिकल्स हेल्प इन सीड जनरेशन. निकेल इन एंटी फंगल. जिंक फॉर वायरल. सारे याद नहीं करने, मेंस के लिए 3-4 याद कर लेने हैं कि अगर नैनोटेक इन एग्रीकल्चर आ जाए तो वही नैनो सेंसर, नैनो हर्बिसाइड, बेटर प्रॉपर्टीज, मोर एफिशिएंट, नैनो फर्टिलाइजर, ये सब ना लिखें. एक दो कोई बढ़िया एग्जांपल हो जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि पढ़ के आया है, इसलिए ये एग्जांपल दिए गए हैं आपको. कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. न्यूट्रिएंट रन ऑफ विल बी रिड्यूस्ड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी विल इंक्रीज. इंक्रीज एज इन मतलब उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, जैसे हमने देखा था इन केस ऑफ नैनो यूरिया फर्टिलाइजर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, राइट. ओके, अब ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज हैं. अगर हम यूज करेंगे, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी के साथ ये कैसे रिएक्ट करने वाला है,
राइट, वी हैव नॉट डन दैट रिसर्च, इट इज मोर रिएक्टिव, तो हो सकता है ये कोई नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करता हो. देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगेन वी हैड अ जेनेटिक डिवाइड. If we start using nanotechnology in agriculture, we will also have a nano divide. Some farmers will prosper and others won't, right? Then it might reduce some biological diversity. तो ये कुछ concerns हो गए. For your mains only. Health sector में we have seen targeted drug delivery. Prosthetic device में use कर सकते हैं. Prosthetic means जो बाहर से लगाते हैं, मान लो artificial limb. इसमें हम use कर सकते हैं, जो biocompatible होंगे वो better काम करेंगे. गोल्ड नैनो पार्टिकल में देखा था, इन मेडिकल इमेजिंग इट कैन बी यूज्ड. तो अगेन सर्टेन एग्जांपल्स आर गिवन यहां पे, लेकिन एक चीज लिखी है एलाइजा टेस्ट. दिस आई विल टीच यू इन डिटेल, नॉट टुडे बट आई प्रॉमिस जब हेल्थ के वो एक दो टॉपिक बचे हैं उसमें एक ये भी है. दिस विल डू. डिफेंस में आप कोटिंग कर लो, है ना, यू यूज द प्रिसीजन, आप नैनो सेंसर बना दो. जो भी चीज आप बल्क लेवल पे बनाते हो उसको आप नैनो लेवल पे बनाते हो. तो ये आपको दिया गया जस्ट टू टेल यू कि मेंस में जब आए यू शुड, अगर नैनो टेक्नोलॉजी पूछ लें 15 नंबर का, तो आपके पास 15-16 बढ़िया एग्जांपल होने चाहिए. तो एग्जामिनर शुड रीड एवरी पॉइंट, वही बेसिक चीज ना लिख के हुआ. इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल यहाँ ग्राफीन हमने देख ही लिया था फॉर फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन, क्वांटम डॉट्स, क्यूएलईडी, कार्बन नैनो ट्यूब से हम अभी जो सिलिकॉन के चिप्स बना रहे हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है सिलिकॉन पे तगड़ी वर्ल्ड में इस टाइम पे, विच आई विल टीच ऑन यूट्यूब इन व्हेन आई एम टीचिंग यू IRPT 365, उसको रिप्लेस करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब यूज हो सकता है. अब कुछ रिस्क भी होंगे, हेल्थ रिस्क है, बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है, टर्म नहीं समझ आती है तो एनवायरमेंट में समझेंगे. एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन है, कंप्लेक्सिटी ज्यादा है, राइट. देन देयर इज अ फियर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल्स. दिस मींस कि हम ऐसे कुछ नैनो मटेरियल्स हैं, हम उनके 4 पार्टिकल लगा दो, देन दे टेंड टू मेक मोर ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने आप कर ले रहे हैं, राइट. Just need to remember this. कैसे होता है और क्यों है not important. Again for means I've just given you some points. Okay, basic concept आपको समझ आ चुका है. Now you will not face a problem because applications are asked, but applications are easy to understand if you know the basics. So I will again expect that you read these slides by yourself, and I am not spending time here. Okay, all right. ये है इंडिया का नैनो टेक्नोलॉजी में. इंडिया is doing really well. We are in the top 5 of the world. हार्डली ऐसा होता है कि किसी टेक्नोलॉजी में वी डू दिस, बिकॉज वी स्टार्टेड इन 2007 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर CNR राव. वी स्टार्टेड अ नैनो मिशन एंड तब से इंडिया हैज बीन डूइंग वंडर्स इन नैनो टेक्नोलॉजी. वी आर एट 3rd level आई थिंक आफ्टर USA एंड चाइना इन द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, राइट. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसके क्या क्या मिशन है देखो. अब जब ऐसा कुछ मिलता है ना नैनो मिशन, यार क्या मिशन, जो नैनो मिशन अगर आप बनाते तो क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं उसके, है ना. आप भी चाहते हैं रिसर्च बढ़े, आप भी चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप भी चाहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो. तो ये चीजें याद नहीं करनी होती प्रीलिम्स में. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. इज इट पॉसिबल दैट यू मेक एन नैनो मिशन एंड यू से कि नहीं मुझे नहीं करनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. यू वुड अलाउ दैट. तो ये चीजें जस्ट रीड वंस एंड मूव ऑन, राइट. इंडिया इज टुडे अमंग द टॉप 5 नेशंस इन नैनो टेक्नोलॉजी. Okay, and we have also established a national regulatory framework roadmap called NRFR. But obviously if you make a nano mission you will want regulation, you will want industry academia linkage, etc, etc, right. Okay, now these are the 2 things that are also there for nanotechnology. There is a ICONSAT. This is the International Conference on Nanoscience and Technology. ये इंडिया ने कराई है. Just remember ICONSAT. And the Center of Excellence in Nano Electronics is made in IIT Bombay. These are the other 2 things. But again, this ये चीजें आप इग्नोर कर सकते हो प्रीलिम्स में. Applications I will expect कि आप एक बार खुद से रीड करके जाओगे. But since you understand the basics now, you will not have a problem. All right. This brings us to the end of nanotech. Now let us continue with space technology. Okay. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 or maximum 2 questions in prelims. So we will study it as per its importance. This is huge importance. Okay, बहुत ज्यादा importance है ये मत समझ लेना कि 1-2 क्वेश्चन है. 2 नंबर से प्रीलिम्स छूटता है लोगों का, राइट. आई हैड रिटन दिस लाइन ताकि लोग काम डाउन, भाई काम नहीं होना. 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे से समझना है इसको. इफ वी गेट दीज 2 क्वेश्चन राइट, 4 नंबर बढ़ गए.
4 नंबर में दुनिया इधर की उधर हो जाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 questions on prelims is very very important. Okay, sorry for the outburst. Okay, let's start. देखो, we start with gravitational force. Gravity is bending of space time, but this we will not understand today. Today we will understand like a force, that gravity is a force. Gravity का जो force है, देखो, when I am teaching you space tech ना, मैं आपको 2-3 formulas बताऊंगा. आपको बिल्कुल भी वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. आपको बिल्कुल भी उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है ये देखने की जरूरत नहीं है, बट उस फॉर्मूला से हमें लॉजिकली क्या समझ आ रहा है ये समझने की जरूरत है. जैसे वी डू G m1 m2, ओके सॉरी ज्यादा हो गया. फोर्स इज इक्वल टू G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, into mass of first body into mass of second body divided by the distance between the two bodies. This is the formula for gravitational force. So if there is body 1 and body 2, they have distance r between them. Iska mass is m1, whatever mass, 10 kg, 20 kg. Iska mass is m2. Then the force will be G multiplied by m1 into m2 by r square. Now I am an object who has mass. This board is an object who has mass. We are very close to each other, so there is distance is also small. So why is there no gravitational force between me and this board? Ideally this board should come and hit me, or I should go and hit the board if the gravity is an attractive force. There is gravity with the earth. If I jump up, I will immediately come down because gravity is pulling me down, earth is attracting me, right? तो बोर्ड के साथ क्यों नहीं हो रहा है? बोर्ड के साथ इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज दिस वैल्यू G, राइट, दिस वैल्यू G इज दिस 6.6 into 10 raised to power minus 11. ठीक है, 10 raised to power minus 11, तो 1 by 10 raised to power 11 मतलब 10 zeros, 0.10 zeros and then 6 will come. तो इतना कम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कि जब तक मास ह्यूज ना हो, जैसे अर्थ जितना मास ना हो, तब तक अप्रिशिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. अप्रिशिएबल मींस कि उसको हम नोटिस कर सकें. मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बोर्ड से और इस बोर्ड को भी लग रहा है मेरे से, पर वो इतना कम है कि क्योंकि दिस कांस्टेंट इज सो लेस इन दिस फॉर्मूला, दिस G इज सो लेस कि यहां कोई भी वैल्यू पुट कर लो ये ऑलमोस्ट जीरो ही आता है. ठीक है, बट जब यहां पे वैल्यू होगी मास ऑफ अर्थ, तब ये ग्रेविटी काम की होगी, right? Okay, so for gravity to operate you need a very very large mass. Okay, all right, ये बात समझ आ गई. Now let's talk of orbits. Orbit क्या है? Orbit stands for the imaginary path taken by a celestial body or a spacecraft due to gravitational force around another body. Okay, अब देखो the advantages of learning on a digital board. This is the earth. Okay, can you see it? This is the earth. Around it there is a celestial body जिसका orbit है. What is that celestial body called? It's called the moon, right? This is what the orbit looks like. ये जो line है, this is the orbit of the moon. ये रहा moon, right? So this is the earth. Earth के around the body moon is rotating like this, ऐसा, revolving rather, it's not rotating, it's revolving like this. So this is an orbit. The central body is the earth. If we look at the solar system, okay, so we will see what? We will see the sun. We will see the sun and all the other planets around it. They are going in orbits around the sun. ठीक है, ये सन है, सन के आसपास ये देखो ये मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ. सो दिस इज व्हाट ऑर्बिट, उसके आसपास घूम रहा है. तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, क्यों, व्हाई इज इट गोइंग लाइक दिस? यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना. सम फोर्स इज देयर इन दिस डायरेक्शन, बट अगर ये सिर्फ इस डायरेक्शन का फोर्स होता तो ये अर्थ जाके सन में हिट कर जाती. ऐसा तो नहीं हो रहा. तो क्या हो रहा है, अर्थ ऐसे जा रही है, इट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे, इन दिस फॉर्म.
राइट। तो क्या है कि एक अर्थ की वेलोसिटी भी है, तो इट इज लाइक टाइंग अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रोटेटिंग इट लाइक दिस, ऐसे घुमाने की बात हो गई। तो व्हेन यू रोटेट इट लाइक दिस, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग अराउंड इतना तेज तेज, राइट, इट इज गोइंग अराउंड रियली रियली क्विकली, उसकी एक वेलोसिटी भी है और यहां पर भी एक फोर्स है, राइट। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेलेस्टियल लेवल, सेलेस्टियल मतलब स्पेस के लेवल पे, ओके। सो ऑर्बिट्स आर इमेजिनरी पाथ्स taken by celestial body or spacecraft due to centripetal force and gravity। centripetal force समझते हैं अभी एक मिनट में, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये है सन, ये है अर्थ, या रादर ये है अर्थ, ये है मून, अर्थ एंड मून, मून ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो मून की इस तरफ कुछ वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी समझते हो ना, वेलोसिटी इज स्पीड एंड डिस्टेंस, speed is how fast you're going, if I combine speed and distance I will make velocity। तो ये velocity है, एंड अर्थ की कुछ ग्रेविटी भी है, ऐसे कुछ ग्रेविटी है अर्थ की, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी एम ऑफ अर्थ इंटू एम ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड। और यही फोर्स अगर हम वेलोसिटी के लेवल पे कंपेयर करें, अगेन ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया देने के लिए दे रहा हूं। अगर हम मून के लेवल पे कंपेयर करें तो दिस विल बी, अगर हम मून की वेलोसिटी से इसको कंपेयर करें तो दिस विल बी मास ऑफ द मून इनटू वेलोसिटी ऑफ द मून स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आर। ये है फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट इट इज कीपिंग इन टच। क्या मतलब है इस बात का, इधर जो फोर्स लग रहा है ये, यही इसकी वेलोसिटी को भी रोक रहा है ना, इससे ज्यादा डिटेल में फिजिक्स समझने की जरूरत नहीं है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला इज द सेम एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, मून ऐसे घूम रहा है एंड टुवर्ड्स द सेंटर देयर इज फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हु, ग्रेविटी। So mv square by r, mass of moon into velocity squared divided by r is equal to g into mass of earth into mass of moon। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूं कि मून कितना तेज घूमेगा अर्थ की वजह से, तो मुझे पता चल जाएगा, राइट। और ये किन चीजों पर डिपेंडेंट होगा ये हम देखते हैं, इधर भी मास ऑफ मून है, इधर भी मास ऑफ मून है, तो ये तो हम काट सकते हैं, राइट। इधर भी एक आर है, इधर आर स्क्वायर है, तो मैं ये काट सकता हूं। आई होप इतना आपको आता है, राइट। तो अगर मैं देखूं ये क्या हो गया, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू v ऑफ मून स्क्वायर्ड। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो इधर क्या होगा, v हो जाएगा और इधर जाएगा ऐसा, है ना। तो इससे क्या पता चला, वेलोसिटी ऑफ मून इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कट गया। तो अगर कोई बॉडी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, चाहे वो सैटेलाइट है या अर्थ सन के अराउंड कर रही है, उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी तेज जाएगी, किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है। जितनी पास होगी वो अर्थ से, 1/r है ना इधर, r अगर कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, r अगर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो दिस वेलोसिटी ऑफ एनी सैटेलाइट और एनीथिंग अराउंड द अर्थ डिपेंड्स सिंपली ऑन द डिस्टेंस। यहां पे मरकरी इज क्लोजर टू द सन, अर्थ इज फार्दर फ्रॉम द सन, तो अर्थ की जो वेलोसिटी होगी अराउंड द सन दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा है, r इज मोर, सो वेलोसिटी विल बी लेस। मरकुरी का r is less, so velocity will be more, so Mercury will be rotating around the sun much faster than the earth revolves around the sun, not rotate, revolves। Mercury would revolve around the sun much faster than earth revolves around the sun। तो Mercury का जो year होता है, what is year? Year is time taken to revolve around the sun once, that is year। हमारा क्या है year? It takes 365 days for the earth to revolve around the sun, so the year of the earth is 365 days। This depends, does it depend on the mass of earth? No, it depends on the distance between sun and earth, okay। तो मरकुरी का डिस्टेंस कम है, like we have seen in that formula, तो मरकुरी का जो ईयर है वो 88 डेज ही है बस। So Mercury's year is much lesser because it is much close,
So the closer a body is, the faster it will rotate. The farther a body is, the slower it will rotate. I hope this is understood. Don't understand the formula, but understand the concept. The concept is derived from the formula for sure. It is derived from the formula, right? But you have to understand from here what is its implication. That velocity is dependent on the mass of the original body, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. जैसे अगर मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो अर्थ के मास पे तो डिपेंड करता है, बट मून के मास पे डिपेंड नहीं करता. इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो सन के मास पे तो डिपेंड करता है, बट अर्थ के मास पे डिपेंड नहीं करता. व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? द डिस्टेंस. अर्थ अगर पास चली जाएगी सन से तो इट विल रिवॉल्व फास्टर, दूर हो जाएगी तो इट विल रिवॉल्व स्लोअर. अंडरस्टूड? ओके. अब ये है ऑर्बिट, तो हमने समझ लिया क्या होता है, उसमें वेलोसिटी कैसे होती है वगैरह. Now orbits can be classified into elliptical orbit or circular orbit. This is obviously classification on the basis of shape. So elliptical orbit means orbit that looks like an ellipse. This is an ellipse. Circular orbit is one that looks like a circle. Okay. जो planet का orbit है around the sun, that is elliptical. ऐसा जैसे हम वहां देख रहे थे. Right? If you look at the solar system, maybe it's drawn like a circle, but ideally it is an elliptical. राइट. अगर अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स हैं, दिस इज द अर्थ, और अर्थ के अराउंड अगर मैं सैटेलाइट्स की बात करूं, इन सैटेलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है एट सम लोकेशंस. कौन सी है वो लोकेशन, वो हम देखेंगे. ठीक है. हमने ये बात समझ ली कि दिस mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अगेन ये फॉर्मूला नहीं याद करना यार. ठीक है, बिल्कुल भी ये फॉर्मूला याद नहीं करना, बस समझ लो कि वेलोसिटी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. ये हमने डिराइव कर लिया था कि वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. अब हम सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट को कंपेयर करते हैं. राइट. आप सर्कुलर ऑर्बिट देखो, ऐसा दिखता है. डिस्टेंस एट एवरी टाइम, सर्कल का रेडियस इज द सेम, r इज ऑलवेज सेम हियर, तो द स्पीड विल बी कांस्टेंट, not velocity will be constant. We'll discuss that. Speed will be constant here. Okay. And इधर अगर मैं देखूं तो the r is varying because elliptical है. यहां पे तो it is close, r कम है, वहां पे r दूर है. Right? Okay. So अब circular orbit में क्या है? Distance is constant, तो the speed is constant. यहां पे distances कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है. ये ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको, बट आई एम टीचिंग यू हियर. एपोजी एंड पेरिजी. एपोजी इज फार फ्रॉम अर्थ, या फार, अगर हम अर्थ की बात करें तो जब अर्थ विल बी फार फ्रॉम सन तो एपोजी, जब क्लोज होगा तो कहेंगे पेरिजी. अब देखते हैं आप लोगों को कितनी ज्योग्राफी आती है. ये है सन. ठीक है, ये बनाता हूं मैं अर्थ का ऑर्बिट ऐसा. Yeah, even I will draw even more elliptical orbit. Okay, this is what perigee, close. Second, this is what apogee. This is what far, है ना. जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो यहाँ पे शायद 147 मिलियन किलोमीटर है और यहाँ पे 153 मिलियन किलोमीटर है. ठीक है, ये है एपोजी पेरिजी. अब पेरिजी सरप्राइजिंगली इज इन जनवरी एंड एपोजी सरप्राइजिंगली इज इन जून, बट स्टिल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड इसमें टिल्ट का कोई रीजन नहीं है. स्टिल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज, आई थिंक I have slightly messed it. हाँ, नहीं, it's right. Okay, still in the northern hemisphere at the time of January there is winter, even when it is close, it is closer. Earth is closer at this time in an elliptical orbit. Earth perigee पे है, पास है, तब भी जनवरी में the earth is colder and यहाँ पे the earth is warmer. हमें टिल्ट वाला रीजन तो पता है कि टिल्ट से चेंज होता है, एक्सिस है अर्थ की, वो सारी बात ठीक है, बट इस चीज का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता? Why does this not make an impact? When you see the sunlight coming, जो सनलाइट को टेम्पर करने का काम है, जो सन की टेम्परेचर को कम करने का या एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का काम है, वो यहां थोड़ी हो रहा है.
ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ भी जाए या कम भी हो, क्या फर्क है, तो वैक्यूम है। अर्थ पे जो हीट बजट है वो कौन रेगुलेट करता है? दी एटमॉस्फेयर रेगुलेट्स इट। एटमॉस्फेयर में हो रहा है ना, क्लाउड है, ये सब है, तो टिल दी सनलाइट रीचेस दी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। Even if it is 147 or 153, it doesn't make a difference. The real difference is made on the Earth's surface when sunlight comes at the level of the atmosphere. यहाँ difference होना शुरू होता है. At the atmosphere, the difference starts. So that huge distance of 6 million kilometers changing will not make that great of a difference, because the main action on the sunlight is being done by the atmosphere, by clouds for example, by gases for example, by the greenhouse effect for example. ये तो atmosphere में हो रहा है ना, it doesn't depend on this distance. That's why this doesn't make a huge difference, right? Good, Apurva, that was a wonderful answer. Okay, so now let's get back to orbits. We have seen this orbit elliptical, this orbit is circular. Circular में distance is constant, so speed will be constant. In this case, there will be apogee, ये क्योंकि यहाँ अर्थ बनी है तो apogee, sun होता है यहाँ तो aphelion. Apogee पे it is the distance has increased. यहाँ पे distance has increased, correct? तो it will be slower. यहाँ पे distance is less, तो it will be faster. ओके तो ये बात आपको समझ आती है। तो यहां पर क्या है, स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। वहां स्पीड कांस्टेंट थी बिकॉज द डिस्टेंस वाज कांस्टेंट, यहां पे डिस्टेंस इज चेंजिंग, सो स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग। So in elliptical orbit, the distance is variable, the speed is variable, and the velocity is also variable. But in the circular orbit, the distance is constant, the speed will be constant, but the velocity will be variable. And how? Let me show you. Even in a circular orbit like this, if this, let's say, is the Earth and that is a satellite, let's see what the direction of the satellite is at every point. यहाँ पे satellite है ना, ये ऐसे जा रही है. At this point its direction is here. जब मैं यहाँ देखूंगा, अगर मैं इसे gravity से free कर दूं तो ये ऐसे जाएगी. At this point its direction is like this. At this point its direction is like this. At every point the direction is changing. So since the direction is changing, the velocity is variable, but since the speed, the number is constant because of the distance being constant. So in circular orbit, speed is constant, velocity is variable. In elliptical orbit, all three are variable. Now we have to see the classification on the basis of the revolution. Okay, now there is geosynchronous orbit and sun synchronous orbit. Now if the satellite's revolution of the satellite is as per the Earth's rotation, okay, if the Earth rotates, just hold on, if the Earth rotates this way, right, from west to east it rotates like this, and the satellite orientation is like this, like the orientation of Earth's rotation, then it will be called geosynchronous. It is as per Earth's rotation, something like this. यहाँ अगर आपको दिख रहा है, मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ, like this. Earth is rotating and satellite is revolving like that. जो satellite का revolution है वो Earth की rotation के हिसाब से. That is geosynchronous. It is in sync with the geo, which is Earth. The second type is sun synchronous. When the satellite's revolution is in sync with the Earth's revolution of the sun, like this. देख रहे हो, Earth is revolving around the sun और उससे 90 डिग्री पे the satellite is revolving. This is called a polar orbit. Why is it called polar orbit? Because this is also a pole, this is also a pole, and it is synchronized with the sun, not synchronized with Earth's revolution. So it is called sun synchronous or polar orbit. Okay, that is orbiting in the equatorial plane. Let me explain. When it is a geosynchronous thing, it will be orbiting in the equatorial plane. Not used to this. Okay, so this is the Earth. So it is revolving like this. So this is in the equatorial plane around the equator. This is what geosynchronous.
and what will be sun synchronous? It will be like this. Sun synchronous is also called polar. So polar and geosynchronous. Okay, all right. Now what are the applications? ये सबसे important है. Uधर the application is communication and navigation. It will help in communicating and navigating. Here the application is earth observation and remote sensing, and we'll understand both these in through a video when we go ahead. हमें सब समझ आ जाएगा कि geosynchronous से ही why are we communicating and navigating, and sun synchronous से why are we observing and remote sensing. Right now just understand, but I'll show you a video and it will make it crystal clear for you. Okay. Now the next question is, why do satellites not fall down? जो हमने पहले क्वेश्चन इग्नोर कर दिया था, right? Why does a satellite not fall down? ग्रेविटेशनल फोर्स से सैटेलाइट शुड गिर जानी चाहिए उसको नीचे. देखो, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ on a building and I throw a ball, it will fall like this. Now let's say I throw a ball even faster, so it will fall like this. Now I throw it even faster, so it will fall like this. ये तो तब है अगर मेरा ग्राउंड प्लेन है, बट मेरा ग्राउंड प्लेन है ही नहीं ना. मेरा ग्राउंड इज अर्थ इज स्फेरिकल. तो पहले मैंने एक बॉल फेंकी, इट फॉल्स लाइक दिस. सेकंड बॉल फेंकी, इट फॉल्स लाइक दिस. बट कोई तो स्पीड होगी ना जिसपे इट विल नॉट फॉल, कि यहां तक वापस आ जाएगी. सो व्हेन अ सैटेलाइट अचीव्स दैट पर्टिकुलर स्पीड एट अ सर्टेन स्पीड, अ सैटेलाइट ओवरकम्स व्हाट? दिस इज व्हाट? ये क्या है? कर्वेचर ऑफ द अर्थ. द कर्व ऑफ द अर्थ इज ओवरकम बाय द सैटेलाइट एट अ सर्टेन स्पीड. एक सर्टेन स्पीड पे बॉल फेंकने से क्या होगा कि इसके कर्व से ज्यादा वो रोटेट कर रिवॉल्व कर जाएगी. तो इट विल गो लाइक दिस. ये भी समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको. नहीं भी समझ आ रहा तो इट्स ओके. Satellites don't fall because at a certain speed they overcome the curvature of the earth, and this certain speed is called orbital velocity, the velocity that is required to maintain itself in the orbit. Now अगर हम कार चलाते हैं और मैं एक्सेलरेटर दबाना छोड़ दूं तो कार will stop at some time अपने आप, due to two reasons. One, there is friction, यहाँ friction कार को रोक देगी. Second, there is air resistance. एयर विल स्टॉप द कार. धीरे धीरे रोकेगी बट गाड़ी रुक जाती है. अगर आप बिल्कुल एक्सेलरेटर छोड़ दोगे इट विल स्टॉप बाय इट्स ओन सेल्फ आल्सो. अब यहां भी हमने क्या किया था, हमने एक ही बार फेंका है, बार बार तो स्पीड दी नहीं. बट यहां क्या है, वैक्यूम है. इन स्पेस देयर इज अ वैक्यूम. नोबडी कैन हियर यू स्क्रीम इन स्पेस बिकॉज एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. देयर इज वैक्यूम इन एयर, सो वैक्यूम इन स्पेस, सो देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. पहली चीज नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि एयर है ही नहीं, एंड किसी चीज से कांटेक्ट नहीं है. जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा. तो एक बार वो स्पीड अचीव कर ले तो वो उसी स्पीड पे घूमती रहती है. दिस इज व्हाई अ सैटेलाइट डज नॉट फॉल डाउन. इट अचीव्स द स्पीड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एंड दिस सर्टेन स्पीड इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी. अगर नहीं समझ आ रहा है ये तो कोई बात नहीं, जस्ट रिमेंबर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमेन इन द ऑर्बिट. ओके, फिजिक्स है और इसकी जरूरत नहीं है इतनी. नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमने क्या देखा था? वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय r. r क्या था? डिस्टेंस. ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v. व्हाट इज इट डिपेंडेंट ऑन? g तो चेंज होने से रहा, g इज अ कांस्टेंट. मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट. क्या रह गया? डिस्टेंस. सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट is specific to the distance of that orbit. If the orbit is close, you have to be fast. If the orbit is far, you will be slow. ये भी हमने देख लिया था in like when we were comparing Mercury and we were comparing Earth, उनका year, right? So orbital velocity is specific to a certain distance. Okay, orbit समझ आ गया. Now let us understand the three types of orbit. First is LEO or low Earth orbit. Second is MEO or mid Earth orbit. थर्ड इज HEO और हाई अर्थ ऑर्बिट. ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. ये जो ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन है डिस्टेंस पे. कौन सा डिस्टेंस? कि अर्थ से कितना दूर है, हाउ फार आर यू फ्रॉम द अर्थ. दिस इज द क्लासिफिकेशन. लो अर्थ ऑर्बिट की क्या क्लासिफिकेशन है? इट इज 0 to 2000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. ओके, 2000 अर्थ से 2000 किलोमीटर तक
हम कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट है। नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? 400 टू 800 किलोमीटर। 400 टू 800 किलोमीटर है नियर अर्थ। देखो अब जीरो पे तो कुछ रहेगा नहीं ना यार, ऑब्वियसली जीरो पे तो कोई पॉइंट नहीं है। 400 तो मिनिमम ही है, 400 से मिनिमम तो कोई बात ही नहीं है। So when you have the earth and you want to make an orbit, minimum you will go to at least 400 kilometers, उसके बाद बात होना शुरू होगी, और at least 300 kilometers, तो ये 800 तक होता है near earth. Near earth orbit is part of low earth orbit. Okay, then applications. What are the applications in low earth orbit? There is earth observation, यानी कि remote sensing. अगर मुझे अर्थ की ऑब्जर्वेशन करानी है तो मैं वहां से कराऊंगा ना which orbit is closest to the earth rather than doing it from an orbit which is very far away from the earth. तो पहली एप्लीकेशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एंड टेलीस्कोप्स। ओके, अब ये सोचना है आपने, लेट्स सी हाउ मच ब्रेन यू कैन अप्लाई, दैट व्हाई आर वी पुटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब इसको तो ऑब्जर्वेटरी या इसको तो बाहर देखना है, दूर देखना है, still I am putting it in low earth orbit. Why? Think about it. Earth observation is fairly easy, नीचे देखना है, पास रख दिया. Why am I putting this astronomical observation in low earth orbit? And see, this is also a method of active recall what we're doing. When you think, even if you give the wrong answer, you will never forget this. Why is it done? क्यों रखते हैं? There are two reasons. पहले तो it has to communicate with us, and second for repair. In case there is a problem, we will need to send people. Astronomical satellites are very expensive. So if there is a problem, we will need to send people to repair the observatory, right? It's much easy to do that. Then the radiation that is coming to the earth, if I keep a चलो telescope की बात छोड़ देते हैं अभी के लिए, let's talk of astronomical observatories. Okay, observatory क्या है? वो radiation observe करती है, जैसे इंडिया की एस्ट्रोसैट है. If I place it here, I want to see the radiation that's coming to earth ना. यहां रख के क्या पॉइंट है? I don't want to see what radiation is going on in space. I want to see the radiation that's close to earth. So 1 for the radiation, 2 for the communication, and 3 for the repair. They are kept in a low earth orbit. जैसे some telescopes were also kept here. जैसे let's say the Hubble Space Telescope was kept in low earth orbit, but now they are going in high earth orbit also because the technology has become better. AstroSat, this is Indian Astronomical Observatory, and ISRO की बढ़िया बात है, they name everything according to word breakdown. They have named it AstroSat, Astronomical Observatory Satellite, right? तो याद करने की जरूरत ही नहीं है. It is at 650 kilometers. This is made by India. Why? Because A, we want to see the radiation that's coming to Earth, not the radiation that's in space. We want to see that also, but उसकी application कम है. Second, I want to repair quickly. Third, I want to communicate. For example, in the Hubble Space Telescope, what happened? At some point, there was a problem in the lens. So NASA was able to send astronauts to fix that. And still the Hubble is working. Okay? Alright. What else is there in the low Earth orbit? अभी एक और मजा आने वाला है. What else is there in the low Earth orbit? Space stations are there. Space stations are there in the low Earth orbit. जैसे कि the International Space Station, it is at 384 kilometers from the Earth. Now you might think that it's going very fast. Yes, it is going very fast. But Earth is also going very fast around the sun. Do you feel it? We are currently revolving at around some 1700 kilometers per hour, something like that. I'm not sure the exact figure. But are you feeling it? No, right? So they also don't feel it. It doesn't matter how fast it goes, but it's important to have it close, that in case you need them to come back, in case there is a problem, it's easy to do it. So the space stations are also put in the low Earth orbit. Now, who made the International Space Station? This is important. कौन सी countries का collaboration है in the International Space Station? This is important. This is NASA of USA, Roscosmos, यहाँ Roscosman लिखे है गलती से, please correct that in the slide. It's Roscosmos. ठीक है, some typo is there. Roscosmos of Russia, European Space Agency, JAXA of Japan, and Canadian Space Agency of Canada. These 5 have made. Roscosmos पे क्यों focus कर रहा हूँ? Because बाकी you will guess. USA, Europe, Japan, and Canada are NATO allies, so it's not a problem. But Russia is also involved. This, if comes in the prelims this year, you are much likely to mark wrong
बिकॉज आपको लगेगा कि यार यूएसए और रशिया ने साथ में थोड़ी किया होगा, दे हैव डन इट टुगेदर. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज अ कंट्री कॉल्ड चाइना. This is the main problem. Okay, so there is a country called China that is making a Tiangong space station. It has already made it. It is a Tiangong space station occupied only by China. Tiangong is a space station occupied only by China. What could be a possible concern? Weaponization, spying, control, monopoly of space operations. Right? Here there are 5 countries, so they have to collaborate. Right? But here there is only one country. Okay, so this becomes a problem. अब देखो, why these 5 countries only? Why these 5 countries only? Just 1 second. 1, 2, 3, 4, 5. All of them are located on the northern satellites of the world, known as the global north. Since they were the developed countries, they have done things together for their own development, right? Ye hai global north. They have monopolized space, they have monopolized technology, they have monopolized the resources of the world for their own growth. What do they, when we read environment, I will also teach you how they are now using this monopoly, using this power to even sabotage the climate change negotiations. जो वर्ल्ड में आज क्लाइमेट चेंज है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्रियलाइज पहले हुए, दे एमिटेड मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इंडिया हैज एवर डन, right? But now they are teaching India to reduce your emission because they like to dictate to the countries here called the global south. But what happened? These countries are now in a fix because there are 2 countries here, India and China, that are now rising. China made its space station, ISRO is doing well. So what is happening? There was a set order in the world. There was a set order in the world that the global north will dominate. Okay, but now the countries of the global south have also started rising economically, militarily, demographically. So this is what they are resetting the global order called the new world order. This is what is happening. So this Tiangong by China can also be related to the idea of a new world order. Another wonderful example of that is the BRICS. The BRICS has a new development bank that does multilateral lending, means lending to countries who are in a crisis. But whose original responsibility was it to do the multilateral lending? IMF and World Bank. But IMF is controlled by EU. World Bank, no decision can happen without USA consensus. So these global north countries were controlling how you get your money. In 1991, when we had a crisis, we had to beg the IMF, and IMF gave us certain conditions. You liberalize your economy, you open your economy, you let foreign companies manufacture. But now the countries of the global south, Russia here is an exception, but the countries of the global south have made this new development bank, and this is now giving multilateral loans to the countries that are in debt crisis. What is it leading to? It is leading to the resetting or the revision of the old international order, leading to the new world order. And that is why you will see in certain articles that China is a revisionist international power. It wants to revise the international order that has been established, the international rules based order. IR पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताता हूँ ये सब. Okay, all right, let's come back here. I just do these things weakness to break the monotony of what we are studying. We were studying low Earth orbit. We were studying the applications of low Earth orbit. We were studying space stations. Space stations mein we were reading International Space Station and the Tiangong one. Tiangong is by China. So space stations have certain applications, uses for us. First is microgravity experimentation. Certain experimentation cannot be done on Earth, but at that level of gravity is less, because gravity का formula क्या था? Force is equal to gravity into mass divided by distance squared.
डिस्टेंस जब इंक्रीज हो रहा है, अर्थ से आप ऊपर चले गए, ग्रेविटी कम हो जाती है, तो कम ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस वाज बीइंग ट्राइड। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। स्पेस ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, स्पेस वोयाज एंड स्पेस टूरिज्म के लिए इट कैन एक्ट एज अ टर्मिनल। स्पेस टूरिज्म यहाँ लिखा है। अगर हमें किसी और कंट्री पे मैंड, किसी और प्लैनेट पे मैंड मिशन भेजना है, मान लो मार्स भेजना है, तो पहले यू मेक द एस्ट्रोनॉट गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फ्रॉम देयर यू गो टू मार्स, तो इट इज लाइक अ टर्मिनल, एंड यू वांट टू डू स्पेस टूरिज्म, which is my dream. So for that also you have this international space station, and it is a servicing workshop also, like we had seen in the case of Hubble Space Telescope, that in Hubble Space Telescope they had sent the astronauts on a spacewalk, that is servicing workshop. These are the applications of a space station. Now there is medium earth orbit. 0 to 2000 क्या था? लो अर्थ। 2000 to 36,000 क्या था? मीडियम अर्थ। This includes two things, geostationary and geosynchronous. यहां आप सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि जियोस्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस, इन सब में क्या फर्क होता है। ठीक है, देखो स्टेशनरी मीन्स व्हाट, या चलो यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट वॉच अ वीडियो दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, देन विल कम बैक हियर। ओके, लेट्स गो। देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. Okay, it is approximately 24 hours. I'll just wait, I'll just turn the volume up so that you can hear. If a satellite that orbits Earth is far away, it has to travel longer paths to complete one orbit around Earth. To complete one revolution around Earth, it will take 2 or 3 days or even more, depending on how far it is from Earth. If it is near to Earth, it orbits faster and takes less time for a revolution. If satellite is very close to Earth, it orbits Earth 15 to 20 times just in a day. ये बात हमें समझ आ रही है? We have already studied this, right? We have already understood that if it is close to Earth, it will be much faster. Why? Because velocity is a function of distance, right? Velocity जो ये है, it is a function of what? It is a function of distance. When this distance is 35,786 kilometers from Earth, satellite takes 24 hours to complete one orbit around Earth. Very important. At a certain distance, देखो ये स्पीड चेंज होती रहेगी विद द डिस्टेंस, राइट? एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई तो ऐसा डिस्टेंस होगा जब अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन एंड उसकी स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन मैच हो जाएंगी, है ना? जब हर डिस्टेंस पे, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट सी वेयर द नोट इज, या ओके, ऑलराइट, just give me a second. Yes, okay, so if at every distance, right, if at every distance there is a different speed, there has to be some distance at which the speed is exactly same as that of the rotation of the earth, because earth की भी rotation की एक speed है and इसकी भी एक rotation की एक speed है. So at a certain distance what happens, the speed becomes exactly the same. So what does it look like? This is the satellite, I am Earth. Earth will rotate, satellite will revolve. ये satellite revolve कर रही है, Earth is rotating. At a certain distance, the speed of revolution of satellite and rotation of Earth becomes the same. So what is happening? This. The speed at which the Earth is rotating, the satellite is revolving. Okay, check करना आ जाएगा मुझे. So the speed at which this satellite is revolving, at that speed the earth is rotating. So what does that lead to? That leads to a same, it looks to me, जब मैं ऐसे देख रहा हूँ सैटेलाइट को खड़े होके, मुझे लगता है तो स्टेशनरी है, तो हिल ही नहीं रही. If it is very close, then it will go like this. I will be rotating slower, so I will be able to see it move in the air with the telescope. But if it is exactly the same, I will never be able to see it move. So it will appear stationary relative to the earth. So it will be called geostationary. Geostationary. Now at a certain distance, this happens. Now what is that distance? How can I calculate that distance? I know that the velocity
I know that velocity of the satellite is a function of this g into mass of earth by radius. Radius are the distance, r is distance. Okay, अब ये distance कैसे होगा? This distance would be something like this, ऐसा. ये अर्थ का रेडियस, ये हमारा सरफेस, ये कुछ हाइट पे सैटेलाइट होगी, एंड इट हैज टू रिवॉल्व एट द सेम स्पीड दैट द अर्थ रोटेट्स. तो अगर मुझे अर्थ की रोटेशन की स्पीड पता है, आई नो इट रोटेट्स इन 24 आवर्स, तो मुझे उसकी स्पीड पता है. इफ आई नो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट, एंड स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. मुझे डिस्टेंस पता है अर्थ को कितना घूमना है, मुझे टाइम पता है 24 आवर्स लगने हैं. तो फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है. मुझे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ करना है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा जिसके लिए वैल्यू सही होगी. अब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी नॉट जस्ट दिस डिस्टेंस r, ये जो r लिखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट? दिस इज दिस कंप्लीट डिस्टेंस. दिस r इज दिस डिस्टेंस. तो जो भी आएगा उससे मेरे को ये h की वैल्यू मिल जाएगी. तो दिस h, क्योंकि मैंने सरफेस तक का डिस्टेंस काउंट नहीं करना, डिस्टेंस मेजर होता है सेंटर से, नॉट फ्रॉम सरफेस. तो नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस h, कि कितना ऊपर अबव द अर्थ इट नीड्स टू रिमेन ताकि उसकी स्पीड इज सेम एज अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन. तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, इसकी वैल्यू आई 35,786 किलोमीटर, एंड दिस फिगर यू हैव टू रिमेंबर. Okay, 35,786 kilometers. So it was found that at 35,786 kilometers, it will appear as if a satellite in the air is stationary, called geostationary. Now, what is geosynchronous? Let's see. This is same as Earth's rotation period. So, for someone looking above from ground, this satellite appears to be stationary because both are moving at same speed. If distance is more than 35,786 kilometers, satellite takes more than 24 hours to complete one orbit. If it is closer than 35,786 kilometers, it orbits faster than Earth. International Space Station, which is at a distance of around 400 kilometers from Earth's surface, orbits Earth nearly 15 times a day. समझ आ रहा है? Study geostationary satellite orbit. It is at a distance of 35,786 km. समझ आ गया? अगर पास होगा इट विल बी फास्टर, ज्यादा दूर हो गया तो इट विल बी स्लोअर, बट देयर इज वन परफेक्ट डिस्टेंस. ओके, kilometers from Earth's surface. At this distance, satellite takes 24 hours to complete one orbit. Same as Earth. To be precise, it is 23 hours 56 minutes and 4 seconds. But consider it as 24 hours for the sake of simplicity. From the ground, it ये appears है to be important stationary at a point in the sky. फ्रॉम द ग्राउंड इट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी. ऐसा लगेगा कि यही है. It is like this only. It will appear stationary when it is going around. It will appear stationary. Okay, this is important. It will appear stationary. तो इसलिए इसे हम कह दिया geostationary. Right. This is important for communication purposes. Antenna on the ground. Good. अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो. यार मुझे अगर एक सैटेलाइट को रखना है, सैटेलाइट का मेन काम क्या है? What is the main purpose of satellite? Main purpose of satellite is to communicate, है ना? It is to communicate with the earth. अर्थ से मुझे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है, यही तो मेन पर्पस है ना. अर्थ से मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा? आई विल यूज एन एंटेना. क्लियर? आई विल यूज एन एंटेना टू कम्युनिकेट. करेक्ट? ये एंटेना अगर ये लग रहा है कि ये देखो इट इज लाइक दिस, अगर ऐसा है तो मुझे एंटेना हिलाना नहीं पड़ेगा ना. I just, this is the antenna, I am the earth, this is the satellite. I fix the antenna like this. Now I don't have to move the antenna every time the satellite moves, right? So the antenna can be kept stationary. इसलिए इस ऑर्बिट की बहुत ज्यादा वैल्यू है. आप एक एंटेना लगाओ और फिक्स कर दो. अगर सैटेलाइट ऐसे ऐसे होती रहती तो मुझे एंटेना भी ऐसे ऐसे बार बार करना पड़ता. इट वुड बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. बट यहाँ पे दी एंटेना इज स्टेशनरी, ऐसा, right? Because it is moving with the earth. So this is why the geostationary orbit has huge value. Okay,
लेट्स कंटिन्यू. Ground always has a direct communication link to the satellite. There is no need to change direction of antenna continuously. This orbit lies directly above the equator and at a distance of 35,786 kilometers from Earth's surface. This is called geostationary orbit. Satellites that orbit in this orbit are called geostationary satellites. अब ये ऑर्बिट कहाँ है? इट्स इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर ओनली, राइट? क्योंकि अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो अगेन द डिस्टेंस एंड द एंगल विल चेंज. द एंगल हैज टू आल्सो बी कांस्टेंट. तो इट इज इन द इक्वेटर. तो ये है जियोस्टेशनरी. ओके, Let us now study geosynchronous orbits. Geosynchronous orbits are also very similar to geostationary. अब देखो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कैसा है. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी मिनिमाइज दिस. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है ऐसा ग्रीन. ओके, इट इज आल्सो इन द इक्वेटोरियल प्लेन बट नॉट एग्जैक्टली एट द इक्वेटर. जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर के साथ तो ये आपने बना दिया जियोस्टेशनरी. इसके किसी भी एंगल पे हो वो, इट कैन बी एट एनी एंगल टू दिस एट द सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस वही है इसका भी 30. दोनों जियोस्टेशनरी जियोसिंक्रोनस, द डिस्टेंस इज दिस ओनली. ठीक है, बट द एंगल इज डिफरेंट. ये डिफरेंट एंगल पे है, वो डिफरेंट एंगल पे है. व्हाई इज इट एट अ डिफरेंट एंगल? बिकॉज एट अ डिफरेंट एंगल इट कैन कवर मोर डेटा, it can get more imaging, right? But there will be a problem that I will have to move the antenna. Let's see both of those. Orbits. But there is one difference. Geostationary orbit is above the equator of Earth, but geosynchronous orbit need not be exactly above equator. It often orbits at an inclination. The satellites in this orbit also take 20. So it is not exactly above equator, it is at some inclination. This is geosynchronous. It is in sync with the Earth, but it will not appear stationary from the ground, as we will soon see. It is in sync with the Earth, but it will not appear stationary. So called geosynchronous. 24 hours for one revolution, but it is not above the equator. Since this orbit is at an inclination, for someone observing from ground, satellites appear to be moving north and south in the sky in a day. ये देखो, But the satellite will be at the same place in the sky next day at the same time. For example, if a satellite देखो तो अब क्या हो रहा है? It will look like it is moving up and down because of its inclination, जैसा हमने देखा. तो इसकी रोटेशन कैसी होगी? इसकी रोटेशन होगी ऐसी. समझ आया? है तो वही साथ ही. द टाइम इज नॉट चेंजिंग बिकॉज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट बिकॉज देयर इज एन एंगल. सो यहां पर तो द फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक दिस, दिस टाइम इट इज लाइक दिस. इट इज गोइंग अप आल्सो, डाउन आल्सो, अप आल्सो, डाउन आल्सो, बट द डिस्टेंस इज सेम. डिस्टेंस इज सेम, so speed is same. Time period of rotation is the same. moves 25 degree north and south in a day, it will be at 10 degree north at 3 p.m. every day. Hence, in geosynchronous orbit, the satellites return to same place at a particular time of the day. Antennas that receive communication. ये क्या बात हुई कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में although it is changing, but it is changing with time, क्योंकि टाइम सेम है. At 1 p.m. it's here, at 2 p.m. it's here, at 3 p.m. it's here, at 4 p.m. it's here, at 5 p.m. it's here. So at some time of the day, let's say you fix के 3 p.m. पे I have to fix the antenna. So at one point in the day you can fix the antenna and you will get the information at that time, right? You might not be able to get real time information, but at one point it will be there every day at certain time. So geosynchronous, and because it's at an angle, it will also lead to more data collection. And ये orbit limited है, ये blue वाला. It is a limited orbit. You can't put every satellite here. So that is why geosynchronous orbit is also important. From geosynchronous satellites are capable of north-south movement to receive signal. Although geosynchronous satellites move north and south, it broadly remains at the same observable place in the sky. Keep in mind, geostationary orbit is also a type of geosynchronous orbit. Speciality of geostationary orbit. This is also important. Geosynchronous orbit is both these, but geostationary is a type of it. वो वैसा टाइप है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो इक्वेटर पे है, दैट इज जियोस्टेशनरी.
but it is also in sync with the Earth, right? Even the geostationary orbit is in sync with the Earth. So it in the geostationary orbit is a geosynchronous orbit. क्या कह रहा हूं मैं कि जो geosynchronous है, this is the broad term. This only means an orbit that is in sync with the Earth. तो ये तो है ही. All of these orbits are in sync with the Earth, but only one orbit is stationary. So all geostationary orbits are geosynchronous, but not the other way around. Okay? अब जो geosynchronous orbit है उसमें क्या हो रहा था, ऐसे मूवमेंट हो रही थी, ऐसे. So if either I can take the information at one point in a day, or I can involve an antenna that is capable of north-south movement. Only this movement is required. Only north-south movement is required. That is how we use a geosynchronous orbit. Okay. Is that it is above equator. All geostationary orbits are geosynchronous orbits, but not all geosynchronous orbits are geostationary. Clear? Next we shall see what are polar orbits. ये देख लो, ये लास्ट चीज है. This is polar orbit. Polar मतलब sun synchronous, and polar कौन सा है, नियर अर्थ. अर्थ के पास आ गए हम. ये नियर अर्थ ऑर्बिट है जिसमें हम क्या कर रहे थे, रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन. दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडे. We'll just see how this orbit works and then I'll let you go. Planets in polar orbit pass through north and south poles of Earth or near to it. Polar orbit satellites are very close to Earth in the range of just 200 to 1000 kilometers. Hence it orbits Earth 15 to 20 times a day. For example, ठीक है, it orbits the Earth 15 to 20 times a day. It's very very fast. क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस क्या है कि मान लो मुझे पूरी अर्थ कवर करनी है इन वन डे. I want to observe the entire Earth in one day. So it will look something like this. It will pass the Earth 14 times. तो ये पूरी अर्थ को बार बार देख लेगा. So if it is passing these many times in a day, it will cover the entire Earth. It is doing it fast. I will not have the antenna to track it every time. Data मुझे थोड़ा delayed मिलेगा, but it will cover the entire Earth, known as Earth observation. For this, I need a satellite that is fast enough to cover the Earth. To cover the Earth every time. In every day, it has to cover the Earth. Only then I am able to observe the entire Earth. Okay. So, in a polar orbit, like we have seen here, what is happening? This is happening. If it goes this fast, it covers the Earth. Now I can use it for Earth observation. I can use it for remote sensing. So obviously this will be, polar orbit will be a near Earth orbit because I want it to be fast. So this is it for today. This video, ये जो वीडियो है जो हम देख रहे थे, if you search geosynchronous versus geostationary versus polar orbits, आपको YouTube पे दिख जाएगी. It is created by a channel called Clarity of Concept, and full credit to that person. Right? I don't believe in stealing other person's work. I am using his video to show you. आप प्लीज जाके उसकी वीडियो देखो, सब्सक्राइब टू देयर चैनल, गिव देम लाइक्स बिकॉज ही डिजर्व्स इट. इट वाज अ वंडरफुल वीडियो. Okay, it's the channel name is Clarity of Concept. Okay, all channels with the name Clarity have great content, and if you search geostationary versus geosynchronous versus polar orbit, you will be able to see that video. So first question,
Solve this question, question 2. Okay, question 3. Question 4. Okay, question 5, last question for today. Thank you all for your active participation. Okay, we're done. All right. Firstly, हम answers discuss करते हैं. But before that, I am so happy that so many of you are participating actively, right? And देखो ये बहुत important है. It's very very important for you to participate in these tests because see if you do previous year questions, होता क्या है? You will get an idea of how UPSC frames the questions, and you are doing them in a test format after you have taken the class. So you are tired also, right? This is great. You will get a lot of very good practice here. Okay, all right. This is the first question. Answer here is, please correct that, it's not the answer. Okay, but we'll read the question and see. A company marketing food products advertises that its items do not contain trans fats. We have read trans fats. This is the previous year question
and this one more thing, we are doing level like very tough questions because these are the toughest possible questions. इससे tough तो कुछ है ही नहीं ना, because these are the UPSC questions, right? What does this campaign signify to the customer? That there are no trans fat. So first, food products are not made out of hydrogenated oil. This is correct, right? Because partial hydrogenation was done to create trans fat. This is trans fat free. So first statement is correct. Second statement, food products are not made out of animal fat. So this statement is wrong because animals also contain saturated fat. And trans fat don't come only from animals. Some come from animals, but most trans fat are artificial. So if something is trans fat free, you cannot say it has no animal fat. It might have saturated fat. Saturated fat come from animal, right? So second statement is wrong. Third statement, oil used are not likely to damage the cardiovascular health of consumers. Now this is a slightly controversial statement, but the answer is C. I'll check this also because the answer is given differently in different places. I'll check that. See now, if you consider it, saturated fats can also cause damage, but they are not as bad as trans fats are. So just give me some time, I'll check this question, but I hope you understand the concept. In my opinion, the answer should be C. Okay. Second question is with regards to carbon nanotubes. All right. Now they can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. Yes. Even if they are not biocompatible, they can be used as carriers of drugs and antigens. Why? Because even viruses are used as carriers of antigens. Even viruses generate immune response. Still they can be used as a drug, as a carrier. Even the medicines that you take, they are technically foreign things, but you are taking them, right? Because they are in small quantity. They are acceptable. Small quantity of foreign things are acceptable. Even your food technically is foreign organism for the body. So a small quantity is fine. But if you make them into a blood capillary, it will be that constantly blood has to flow through them, constantly. So this is wrong. And if you eliminate the second statement, you'll get the answer, which is C. Now in the exam mode, this was a difficult question. And if you got it wrong, it's okay. But I'm just telling you how to think. We have read carbon nanotubes are not biocompatible, right? So this is second question. Now, this is easy question. With reference to use of nanotechnology in the health sector, which of the following statements are correct? Now, I don't know if you have noticed this thing about the test or not, but every time I give the 2 tough questions first and then the 3 easy questions. If there is such a classification. Why? Because I want you to do the tough question first. I want you to feel pressure first, and then you should not mess this up. वो गलत करने की आजादी है, ये गलत करने की आजादी नहीं है, right? Targeted drug delivery is made possible. Yes. Nanotechnology can contribute to gene therapy. Yes, it can contribute because it can do things at the level of the cell. So I might be able to make a nanoparticle that goes and cuts DNA at a specific place. So yes, it can contribute, and answer is C. Now, graphene is seen in the news recently. What is its importance? Dekho, in these questions, you should read the options and also try and find the option you can eliminate. For instance, if you look at the third option, it is made entirely out of silicon. So entirely anyway is an extreme word, and you know it is not entirely out of silicon, it is actually a carbon allotrope. But what I wanted to explain to you through this question was, ये word entirely क्यों लिखा? देख कह सकते थे it is made of silicon, but graphene में मान लो 1% भी silicon होता, graphene में मान लो 1% भी silicon होता, तो भी काम चल जाता. Even if there was 1% silicon, this statement could have been right, but they put this word entirely, right? Entirely. So this made it an extreme statement. And anyway, you know, आपको तो knowledge भी है कि silicon की नहीं है. If you eliminate the third one, you will get the answer 1, 2, and 4. Fourth statement, you can see it can be used as conducting electrodes required for touchscreens, LEDs, and organic LEDs. And we have read that graphene's main purpose was flexible LED. Okay, all right. Last question. This is 2022 prelims question. Last year. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature.
This of course is wrong. कुछ तो nanoparticle natural भी होते होंगे, right? Somewhere or the other nanoparticles must be getting made in nature. How is it possible to even prove this? You will have to check every natural particle to make sure the statement is correct, right? अब दिमाग लगाओ, ये चेक करने के लिए that nanoparticles do not exist in nature, I will have to scan every nook and cranny of the earth, and only then I'll be able to say this. So this is wrong. Now we are left with 2 and 3 or 3 only. So 3 I don't have to read. Now nanoparticles of some metallic oxide are used in the manufacture of some cosmetics. See how generalized they have made it. Some metallic oxides, some cosmetics, and we have already read titanium is used, zinc is used in the manufacture of sunscreen. So this is correct. Answer is B. All right. So we are done with this. Now let us do the one-pager revision. Okay. Let's revise all the one-pagers that we have done so far. All right. Let's start. So we started with basics of biotech. Okay. In basics of biotech, we read cell. Cell is the basic unit of life. It has a nucleus, it has a cell membrane, it has a cytoplasm and cell organelles. This we have read. Then for growth and reproduction, important information had to be transmitted. What was that information? DNA, deoxyribonucleic acid. There was a long DNA molecule, it needed to be condensed. So what was happening? DNA to chromatin, chromatin to chromosome. This was the first thing we had read. Then we read DNA to RNA to protein, the central dogma of genetics. Here we read that there are two processes, transcription and translation. You know the meaning. Why are we making RNA? So that it's single stranded and the processing is easier. Why am I making protein? Because they are enzymes for cellular function. Then what is RNA versus DNA? We read some differences, single strand, uracil in place of thymine, etc. Then we read about virus. Virus, borderline between living and non-living. They have DNA and RNA and protein, but no cellular machinery. So they cannot be cultured outside the living cell. They can only reproduce inside host cell by using the machinery of the host cell to reproduce. So they need a living medium to reproduce. Some viruses start with RNA. These are retroviruses. All RNA viruses are not retroviruses, but some RNA viruses are retroviruses. Example of that is HIV/AIDS. So what was the enzyme they were using? Reverse transcriptase enzyme. All right, this was the first biotechnology one-pager. Okay, then we read, I'm sorry it's visible like this, but I'm unable to make it, but I'll read everything that's written, don't worry. Then we read that the cell is the fundamental unit of life and unicellular organisms can exist independently. Okay, cell theory we read, all living organisms are composed of cells and omnis cellula is cellula. That means new cells arise from pre-existing cells. Then we read that there is a basic structure of the cell, that is nucleus, plasma membrane or cell membrane and cytoplasm. Then there were certain differences between eukaryotic cell and prokaryotic cell. Now those differences are written here. We read that eukaryotic, new nucleus, are those cells whose nucleus is membrane bound. Prokaryotic are those cells who don't have membrane bound nucleus, who don't have membrane bound organelles. So they only have ribosome. Okay. Now, then we saw the cell size difference, organism type difference. Of course, prokaryotics are unicellular, they are smaller. Then we saw the genetic material. Genetic material, here it was inside the membrane bound nucleus and there it was naked. Then cell wall, the difference is cell wall is there in prokaryotic cell, but in eukaryotes it is there only in the plant. It's there in the plant, it's there in the fungi, but it's not there in the animal. This we saw. Then we saw that plasma membrane and cytoplasm of course will be present in both. So this was the difference between eukaryotic and prokaryotic cell. Then we saw the components of the cell. We saw what the cellular membrane was. Just try and remember. It was phospholipid bilayer, selectively permeable, certain integral protein, certain peripheral protein. Then there was the cell wall, living, it was non-living structure, rigid, providing support to the cell. Then we read the cell organelles, their functions such as smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum,
ribosome, we read about mitochondria, we read about vacuole, Golgi bodies. We even saw the differences between a plant and an animal cell, that vacuole in a plant cell is bigger because it has to store. Then we read about the nucleus. Nucleus has nucleolus for ribosomal RNA or rRNA synthesis. And then we studied the process of translation in detail using mRNA, tRNA and rRNA, right? Then we differentiated between plant and animal cells. What is the chloroplast? That is there only in plant cell. Cell wall is there only in plant cell. Vacuole is larger in the plant cell. In animal cell there is centrosome and centriole. Then we came to understanding human reproduction. When we were understanding human reproduction, we first understood the concept of chromosomes, right? Then we understood the concept of meiosis and mitosis. This we had understood, right? Then we understood how gamete formation happens. What the sperm contributes is only the nucleus. What the egg contributes is the entire cell. Then we read that in mitochondria also there is DNA. So if in mitochondrial DNA of the mother there is a problem, we need mitochondrial replacement therapy. This was known as three parents baby. For mitochondrial replacement therapy, there were two approaches. Either we could do a pro-nuclear transfer. We could take the pro-nucleus and put inside a third egg. Or we could do reconstructed egg technology, or also called maternal spindle technology. One was before fertilization, one was after fertilization. Pro-nuclear obviously is after fertilization. Maternal spindle technology is before fertilization. Both of these were types of mitochondrial replacement therapy. This is known as three parents baby. This we had understood, right? This was the second class one pager. Okay. Done. Next we moved on to principles of biotechnology. Here we first read basics of genetics. Here we again read DNA versus RNA, the complete process of transcription and translation, the removal of introns in the process of translation, why certain DNA is non-coding DNA, right? Then we learned about getting better genes. Getting better genes could be done through two purposes, either genetic modification or traditional hybridization. We understood the problems of this process and why then this was introduced, right? Then we read the basics of biotechnology. The two principles of biotechnology were genetic engineering and downstream processing. Why genetic engineering? Introducing a foreign gene. Why downstream processing? To obtain the product. Okay, all of this we had read. Now after that, we read certain other things called recombinant DNA. Recombinant DNA is what? DNA that is combined from two organisms to come to one place, that is naturally not found. All right. Then we read the tools of recombinant DNA technology. Which were these tools? Restriction enzymes. What were they doing? They were creating sticky ends. Then they were joining two pieces of genes together, right? Then there was DNA ligase, right? This we had read. Then we read the steps of recombinant DNA technology, those 8 steps. What were they? You isolate the gene first, that's the gene of interest. Then you do the PCR for amplification. Then you cut it with restriction enzyme. You paste it with DNA ligase. Then you insert the plasmid back. Then the bacteria started producing what we wanted it to produce. Then you obtain through downstream processing. This was done in the case of human insulin. So this we read steps of recombinant DNA technology. Then we came to GM crops. In GM crops, we read about BT cotton. We read about RNA interference. RNA interference happening in all eukaryotic cells, but in plants it was specifically useful. We read in case of tobacco. In BT cotton, we read about ball guard technology, the issues of ball guard technology, terminator gene, trait fees, right? Then we read the regulation. Regulation is also there in the next one pager. In the regulation, we read the Genetic Engineering Appraisal Committee, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and 3 other committees and various other ministries as well. All right. Then we read the applications of biotech. Applications of biotech were green biotechnology, blue biotechnology, red environmental and forensic biotechnology, organized like this so that you could write better in your mains. And in this case, forensic biotechnology was used for DNA fingerprinting.
Correct? This we have read. All right. Continuing with the applications of biotechnology, we went to the regulation of GM crops. Here we saw the global regulation, that was the UNCBD, right? Then we read the Indian regulations. In Indian regulations, there were 5 competent committees. Then the GEAC was most important. We read a term called event-based approval mechanism for BT cotton. Event 142 was an example there. Then we read about GM crops in India, in the world, and certain current affairs. In India, BT cotton is allowed. GM mustard, it's allowed for environmental release, but not allowed for commercial release. BT brinjal is banned. GM rubber trials are going on. Then we read in detail what is Dhara mustard hybrid 11, which I believe is very important for this year. GM mustard and its importance. This we have read, right? Why is it still called hybrid? Barney's Barstar technology. This also we have read. Then we came to reading about gene therapy. Gene therapy was of 2 types, somatic and germline gene therapy. Somatic gene therapy was done in those cells that are normally there in the body, and germline was done for those cells that are producing gametes for the next generation. Then we started reading about genome editing techniques, right? In gene therapy, we had also read a couple of other things like in vivo and in vitro. It can be done inside the body and outside in the lab. And we had also read about CAR T cell therapy, chimeric antigen receptor T cell therapy, which is in the news this year. Then we read about genome editing. Genome editing, we read many enzymes. We learnt about the CRISPR-Cas9 system, how it was normally done in bacteria. Then we read the zinc finger nuclease, TALEN, site-directed nuclease 1, site-directed nuclease 2, site-directed nuclease 3, the differences between the two, why site-directed nuclease 1 has been allowed, 2 has been allowed, but 3 has not been allowed. This we read. Then we read about homing endonuclease or meganucleus. This is done. Then we read about animal cloning. In animal cloning, we read somatic cell nuclear transfer technology, the recent cloning by China of an Arctic wolf. This thing we have read, right? Then we have read about therapeutic cloning, that we are making a replica of a human for certain organs, but that was an ethical issue. That also we have understood. Then we read about stem cell therapy and the various types of stem cells. What are pluripotent stem cells? What are induced pluripotent stem cells? What are totipotent stem cells? What are Yamanaka genes? This all we have read. Okay. After that, we came to the idea of vaccines. To understand vaccines, we first read immunity, what is innate and acquired immunity. Then we read about vaccination. Vaccination, the main principle was differentiating the antigen from the pathogen and the principle of memory. Then we read the type of vaccines, either based on administration or based on the pathogen. They can be live attenuated, they can be killed vaccine, they can be DNA vaccine, mRNA vaccine, subunit vaccine. All of this we have read. Then we read the differences between mRNA and DNA vaccine. What are polysaccharide vaccine? What is active vaccine? What is passive vaccine? What is subunit vaccine? What is conjugate vaccine? All of these terms we have read. Then we read about COVID-19 vaccines in India and even the new ones like Incovac, which was a nasal vaccine by Bharat Biotech, or a Zycov-D, which was a DNA vaccine. Finally, we came to some other vaccines like pneumococcal vaccine in the news because of its inclusion in the universal immunization program, it being of 2 types, being a polysaccharide vaccine and then being made into a conjugate vaccine. Then we read Bacillus calmette-guerin BCG vaccine and toxoid vaccine. So this completed vaccines for us. Then we started reading about health. In health, we first read about genome sequencing. This part I think we have done genome sequencing, but some things are left here. We read about genome sequencing and why are we sequencing the genome? Why are we finding out these sequencing? What was the Human Genome Project? What was the telomere to telomere project? This we read. Then we read about viruses. Then I read about nutrient deficiency diseases. What nutrient deficiency disease does vitamin C cause? Scurvy. Vitamin D, rickets. We read about all of that. Then we read pathogenic diseases. We did a table.
That is the only thing I think which is difficult to remember for you, but that you have to do because you saw so many questions are there. We read pathogenic diseases, bacterial disease, viral disease, and most importantly, we studied the transmission mechanism. How the transmission is happening, if it is a fecal-oral disease, if it is a blood disease, how the transmission will happen. Then we read about antimicrobial resistance and the One Health approach. These two things are very important for this year, so please read them in detail because I also told you they are part of our G20 priorities. One Health approach and antimicrobial resistance. This we did, right? Then we did the traditional medicine in India. Traditional medicine, the new center that has been made in Jamnagar. Then we read about neglected tropical disease. This also we know, we studied it with the idea of the global south. Continuing with health, we read tuberculosis, the new regimen, the new plan for elimination. We read the differences between elimination, eradication, and disease control. Then we read about fats, saturated, unsaturated, and trans fats. Give me some time to clarify today's question. I'll do it in next class, right? Then we read about foodborne diseases, what FSSAI is doing. There is the Bhog scheme, hygiene rating scheme. Then we also read about food fortification in India and why rice fortification is becoming more and more important for us, and what is hidden hunger, what is micronutrient deficiency, etc. Then we read about ORS, oral rehydration solution, because of the death or unfortunate death of Dr. Dilip Mahalanobis, who has also been given a Padma Award. In this we read a concept called co-transporter, sodium glucose co-transporter. Now 3 topics of health were left: Indian Biological Data Center, genomic surveillance, and a couple of other diseases. This we'll do sometime later. This is the revision of all the one-pagers so far, except for the revision of nanotechnology, which I expect you to do yourself. Read the nanotechnology one-pager yourself, and then again we will sit down and do all of this revision one more time. So health and biotech I have revised like this. If you have followed the classes well, आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत time लग रहा है, and I understand that. But just understand, if you are able to do all of this for science and tech in one day in May, and one day in May you are able to do environment, you will free up masses of time for other subjects. And that is my goal here. So I hope you are enjoying. I am certainly enjoying teaching you. Thank you for your patient listening.